Hello, am I audible? Hi, Swapnil. Yeah, I can hear you. Yeah, yeah, sure. So now, since more than a lot of people have joined, we can start. Right, So, cool. yeah. Good afternoon, everyone. Thank you for taking out your time and joining. So, today's guest doesn't need an introduction. In fact, I feel that there is no language on the planet that has the capability to fully express the achievements of this person. However, I won't take much of your time as I know how excited all of you have been to interact with Major Vivek. So I will quickly introduce him. Major Vivek Jacob is an ex-para Special Forces veteran. Through his military career spanning 14 years, he commanded teams in three unique Special Forces outfits. While in the SF, he trained in various specialized skills to include unarmed combat, military skydiving, underwater scuba diving, survival, emergency first response, and high altitude terrain. After opting out of Army, Major Vivek founded Team C.L.A.W, which stands for Conquer Land, Water, and Air. Team C.L.A.W has successfully created the first world record on land at the Siachen Glacier, the highest battlefield in the world, in September 2021, and is now gearing up for the water world record in December 2022 at the Lakshadweep Islands in India. Major Vivek, we the students of IIT BHU are honored to host you. Thank you for taking out time from your busy schedule. We salute you. So, sir, to begin with, can you tell us about your journey? Like, what has it been like from reaching the gates of NDA, joining the Special Forces, and then founding Team C.L.A.W? Please tell us about it. Yeah, sure. We can start with that. Basically, I was I was born to a military family. My father was in the army, and my my I'm the third generation in the Indian Armed Forces. My grandfather, father, and then in my father's generation, there was uh, my uncles. Basically, everybody was in the army. In the third generation, I was the only guy who basically joined the army, and I was I've in my growing up years, I've traveled various places wherever my father was posted. You guys can hear me, right? I mean, I'm audible, clear. Uh, yes, yes, we can Yes. hear you, but we cannot see you. You can't see me. That is strange. My camera is on. Let me No, try. sir, we can. अच्छा ये क्या ना? Okay. ठीक है. So anyway, so I was born to a military family and grew up all over India and find boarding school in Shillong and this that. Completed my schooling in Delhi, Army Public School, Delhi, Talakwa. And then after 12th, I pushed off to NDA. I wanted to join the Merchant Navy. That was my first choice. I wanted to travel the world and see places, earn money, and be free. So that's what I wanted. And at that point of time, Merchant Navy seemed like a good place to go to. But at that point of time, I didn't have like money to do marine engineering. It costed, I think, around 5-6 lakhs at that time. So I was thinking of joining as a deck cadet. But at that time, they needed 6x6 eyesight. I did not have 6x6 eyesight. So that option of joining Merchant Navy was closed. Uh, but then, so then that's when I concentrated on NDA. Basically, I didn't have money to afford a college education. So, whatever it was, I had to do it there and then, get out of school and get into life. So I joined NDA, and NDA was a fantastic journey. It was a little bit of a shock when I joined early because I'm a person who's used to having my freedom. So NDA is a place where your freedom goes for a six. So I joined NDA, and NDA was about 3.5 years, 3 years otherwise. But I had an accident, spent 6 months more, had a 6 months more great time there. And then from NDA, IMA was a year, and from IMA, basically, I volunteered for the Special Forces and got commissioned as an officer, as a lieutenant, then and joined joined 9 para Special Forces. I went through a probation period, which is like a selection process. So went through 6 months of a selection process, got selected, went into operations, joined my team, and then
then basically spent out of what 14 years in the army, I spent about 9.5 years in combat, and then at some point, with a total, I had total from 12th to after class 12th, basically till the point I decided to leave, was about what 18 and a half years. And then at some point, I basically peaked out in my profession. I felt that I had done what I had come to do. I had been blessed with great opportunities and great experiences, and I wanted to my view of the world had evolved. Basically, by the time I finished combat, finished commanding my team and things like that, my view of what life means and what is important in life, and what am I, how do I feel right now, what do I want to do, those kind of questions came up, and I wanted to experience something more in life. And so I decided to leave the army, and I wanted to basically, I had existential questions, spiritual questions, जिंदगी मौत और क्या बोलते हैं प्यार or meaning, reason, all these kind of things were there in my mind, and I did not have the answers to those questions at that time, but I knew that I wanted to experience something else. I didn't know what I wanted from there, but I knew कि यार कुछ और करना है, something more, something beyond. So क्या कहते हैं, I decided that I will leave and I will take my dog, and I basically finished off my past life, whatever it was, be it I was married, I had a profession, I was 6 months to go for 6 years to go for a pension, things like that. बहुत सारी चीजें थी, but I was होता है ना जिंदगी में कभी कभी you are blank, you don't know what you want from your life. So I was at that stage, so I said okay, मैंने अपनी लाइफ को वापस जीरो किया, और I was planning to basically go climb a mountain, and रोड जहां भी खत्म होती है वहां से 7 दिन की चढ़ाई चढ़ूंगा, और जहां पहुंचूंगा वहां पे अपना अपना लकड़ी काट के अपना कुटिया बनाऊंगा, और जो पौधे, जो सब्जी खानी है वो उगाऊंगा, और जब मीट खाने का मन करेगा तो शिकार करूंगा, और मेडिटेशन करूंगा, गाने सुनूंगा, चिल मारूंगा 1 साल के लिए। ये मैंने सोचा था, ठीक है। पर फौज छोड़ते छोड़ते मुझे 2 साल लग गए। तो उस दौरान आई मेट एन एयरफोर्स ऑफिसर। बेसिकली मैं हॉस्पिटल में था, मेरी कॉम्बैट स्काई डाइविंग में एक एक्सीडेंट हो गया था, पैराशूट मैल फंक्शन हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल में रिकवरी कर रहा था स्पाइनल इंजरी से। सो देयर वाज दिस एयरफोर्स ऑफिसर, मेरे से जूनियर था, काफी जूनियर था वो, उसने स्विमिंग पूल में डाइव मार दिया था, उसका सर लग गया था और वो बेसिकली चेस्ट डाउन पैरालाइज था। तो एक दिन वो व्हील चेयर पे आया, उसने बोला कि सर मैंने सुना है आप कमांडो हो, आप अंडर वाटर डाइविंग करते होगे। तो हाँ करते हैं। तो उसने बोला सर मेरे जैसा आदमी भी कर सकता है क्या? तो मैंने उसको देखा, मैंने सोचा, मैंने बोला यार तू, मैं रिसर्च करके आता हूँ, बताता हूँ। सो आई रिसर्च्ड ऑन समवेयर ऑन यूट्यूब एंड गूगल एंड ऑल दैट, एंड आई फाउंड द वीडियो ऑफ ए लेडी बैक इन 2015, a British lady. She was diving, she was on a wheelchair, she had scuba cylinders on her wheelchair, and she had a joystick and she had motors attached to her wheelchair, and she was dancing underwater. सू ऑस्टिन करके है, देखना कभी यूट्यूब में मौका मिले तो, सू ऑस्टिन व्हीलचेयर डाइविंग। सो आई सॉ दैट वीडियो, आई वेंट टू हिम, आई शोड इट इज पॉसिबल, उसको वीडियो दिखाया कि भाई कर सकते हैं। तो उसने बोला सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करेंगे? सो आई टोल्ड हिम, आई प्रॉमिस्ड हिम दैट वन डे आई विल टेक हिम डाइविंग, एंड दैट काइंड ऑफ इन माय एम्प्टी स्लेट वो एक टास्क भर गया मेरे कि ये करना है। होता है ना पन्ना खाली होता है ना, कोरा कागज, तो उस कोरे कागज लेके घूम रहा था मैं, पहाड़ चढ़ने वाला था। तो मेरे को कोरे कागज पे पहला ये आ गया, क्या बोलते हैं ना, काम, कि इस बंदे को डाइविंग करानी है। तो फिर मैंने क्या, इट बिकेम लाइक ए टारगेट, लाइक ए मिशन फॉर मी, है ना, कि यार ये करना है। तो मैंने वो मिशन का प्लानिंग करना शुरू किया, उसका पूरा देखना शुरू किया कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा, किस टाइप का वो होगा। तो काफी रिसर्च करना शुरू किया अपना, ये एक काम जो मैंने ले लिया था इस काम को करने के लिए। तो मैंने रियलाइज किया जब रिसर्च करते करते कि ऐसे देर आर मोर देन ए बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिनको है ना ये सब चीज करने का मन करता होगा, है ना। कोई स्कूबा डाइविंग करना चाहता है, कोई पहाड़ चढ़ना चाहता होगा, कोई अपने घर से निकलना चाहता होगा,
कुछ नेचर एक्सपीरियंस करना चाहता होगा, है ना। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो बहुत लोग होंगे यार, ये तो एक बंदा है। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार सबको थोड़ा ना छोड़, मतलब एक को करा सकते हैं तो फिर देखते हैं यार कि कितनों को करा सकते हैं करके। सो ऐसे स्टार्ट हुआ। एंड क्या कहते हैं, पैसा था नहीं मेरे पास, मैंने फौज में कभी पैसे बचाए नहीं थे, जितने आते थे हर महीने फूक देता था। तो क्या कहते हैं, मेरे को एक्चुअली पैसे से ज्यादा कभी लेना देना रहा नहीं है। पैसे की वजह से या होने या ना होने की वजह से मेरी जिंदगी कभी रुकी या बनी नहीं है। तो जितना जरूरत होता है उतना आ जाता है ना। तो क्या कहते हैं, सो उस टाइम पे पैसे थे नहीं, तो डाइविंग का इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, 1.5 लाख का एक सेट आता है, ये होता है वो होता है ना। तो जो भी है मैंने प्लान बनाया कि वी विल मेरे साथ के जो स्पेशल फोर्सेस में मेरे टीम में थे लोग, मेरे साथ ऑपरेशन करते थे, वो लोग भी फौज छोड़ रहे थे, मेरे पास आके जुड़ने लग गए। बोला साहब आप जो भी कर रहे हैं हम साथ में करेंगे, फौज में भी साथ में थे, बाहर भी साथ में जिएंगे। तो ऐसे ठीक है आ जाओ। तो हमने बोला यार प्लान ये है कि हम पूरा इंडिया ट्रैवल करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़, विल ट्रैवल टिल लक्षद्वीप, एंड जितने लोग जो अपाहिज हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, जो भी मिलेगा और जिसको डाइविंग करने का मन है उसको डाइविंग कराते हैं। सो दे लाइक द आइडिया। तो हमने स्टार्ट किया। एंड क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ था नहीं, तो सडनली उस टाइम पे बॉम्बे से एक कॉल आ गया। एक बंदा था बॉम्बे से, उसने रैंडम कॉल किया, बोला यार मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैं आप लोग के साथ कुछ, मैंने सुना है आपके बारे में, कुछ जो भी होगा मेरी तरफ से मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, साथ में कोलैबोरेट करते हैं, बोला उसने। तो मैंने उसको बोला अच्छा आप क्या काम करते हो। तो उसने बोला मैंने नया नया स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट का दुकान खोला है। तो बोला अच्छा वेरी गुड। तो मैंने बोला, यार हम लोग ये डाइविंग कर रहे हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, अगर है आपके पास स्पेयर तो दे दो। तो उसने करीब 15-20 लाख का इक्विपमेंट पूरा भेज दिया उसने, फ्री ऑफ कॉस्ट। He heard what we are planning to do. He had the equipment. He had called up. He sent the entire equipment. उसने पूरा लोड करके काउंटिंग करके सब कुछ विदाउट चार्जिंग अ सिंगल रुपी ही सेंट अस एवरीथिंग। हमारे पास इक्विपमेंट आ गया। फिर हमारे पास जो कुछ छोटा मोटा पैसा था, किसी के पास कुछ 10, 15, 20 हजार 30 हजार है, जो भी था, ऐसे करके हमने जोड़ जाड़ के शुरू किया काम। चंडीगढ़ से भी स्टार्टेड एंड चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर गए। वहाँ पे 24 लोग थे पैरालाइज्ड जो पेशेंट्स थे वहाँ पे। तो हमने उनसे पूछा क्या कहते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे हैं, किसी को डाइविंग करने का मन है तो बताओ। तो 24 के 24 ने बेसिकली वॉलंटियर कर दिया ऑन द स्पॉट। एक्चुअली आपस में झगड़ा भी हो गया, बिकॉज मैंने बोला यार मैं तो सिर्फ 5 लोगों को पर डे करा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैंने पहले बोला था, मैंने वैसे करके, इतना इंथुजियाज्म था सब में। तो दैट वाज वन ऑफ द लाइक आई रियलाइज्ड कि कितना मन है लोगों को ये करने का, है ना। तो जो स्पेशली जो पैरालाइज लोग हैं, इनको फ्रीडम कितना चाहिए, दे हाउ मच डू दे वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ। सो सो क्या कहते हैं, हमने स्टार्ट किया ऐसे चंडीगढ़, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हम पहुंचे थे, हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं थी, हमारे 2 गाड़ियां भर के इक्विपमेंट था, कुछ नहीं था हमारे पास, सिर्फ इक्विपमेंट था और दो गाड़ियां थी हमारे पास, रहने की जगह नहीं थी, कुछ नहीं था। 3 दिन बाद क्या बोलते हैं, बेसिकली हम लोग एक दोस्त के घर जाके बैठ गए और वहाँ पे उसके ड्राइंग रूम में हम 10 कमांडोज एक साथ, पूरा डाइविंग इक्विपमेंट, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, मेरे उनके उनके घर में जाके रहना शुरू कर दिया। और मतलब तीसरे दिन वहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, somebody will have to go on mute I think. तो हाँ, can you hear me? Yes, Yes. Yes, sir. Yes, sir, we ओके can. yes. ओके। तो क्या कहते हैं, 3 दिन वो मेरे दोस्त के घर पे रहे, उसके ड्राइंग रूम में, उसकी बूढ़ी माता जी के साथ और उसके साथ, और पूरी प्लानिंग चलती रही। चौथे दिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो थे उस टाइम पे श्री किरण रिजिजू, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को टालकटोरा का स्टेडियम दे दिया, बेसिकली ओलंपिक साइज पूल दे दिया, ये दे दिया 5 दिन के, बोला जो करना है कर लो, आप यहाँ पे ट्रेनिंग करो। तो फिर उन्होंने पब्लिसिटी भी कर दी, ये भी कर दिया, तो बहुत लोग आए। बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, बट मेन थिंग इज हमने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया और लक्षद्वीप पहुंच गए हम। चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, लक्षद्वीप, ऐसे करके हम 4 जगह रुके और हमने लगभग 119 120
जो लोग बेसिकली पैरालाइज थे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज थी, कभी एक्सीडेंट की वजह से या बाय बर्थ हो गया या जैसे भी है, ऐसे हमने लगभग 119-120 लोगों को हमने डाइविंग कराया। फाइनली लक्षद्वीप पहुंचे और बाय द टाइम बेसिकली लक्षद्वीप पहुंचे तो काफी सारी चीजें एक्चुअली काफी इन लोगों के साथ काम करके, जो पर्सनल डिसेबिलिटी हैं, पैरालाइज लोगों के साथ काम करते करते उनको डाइविंग सिखाते सिखाते उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पता लगा कि उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में एंड उनके दिल में क्या है, करना क्या चाहते हैं। सब इंसान होते हैं ना, चाहे पैरालाइज हो चाहे नहीं हो, है ना, सबकी कठिनाई होती है, सबके कुछ चीजें होती हैं जिसमें वो खुश होते हैं, कुछ चीजें होते हैं जो दुखी होते हैं, कुछ चीजें तो होती है जो वो करना चाहते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सब, है ना, सबका ऐसा ऐसा होता है। तो उनके बारे में मोटा मोटा मेरे को काफी कुछ पता लगना शुरू हुआ। जब तक बॉम्बे खत्म हुआ, है ना, चंडीगढ़ दिल्ली बॉम्बे तक पहुंचा, तो बॉम्बे खत्म हुआ तो मैं एक्चुअली काफी परेशान हो गया था। जहां देखो किसी ना किसी से मैं कुछ मांगता हुआ पाया जा रहा था, है क्या बोलते हैं, किसी से कभी स्विमिंग पूल, किसी से कोई इक्विपमेंट, किसी से कुछ मांग रहा था मैं। तो मांग मांग के मैं थक गया था और मुझे मांगना बिल्कुल वैसे भी पसंद नहीं है। तो मुझे ये वाला बिजनेस प्लान ठीक नहीं लग रहा था कि मांग के, है ना, कुछ काम करें, कोई किसी से, है ना, कोई फंडिंग लें या कुछ करें। ये वाली कहानी मुझे एक्चुअली ठीक नहीं लगी, क्योंकि आई रियलाइज कि यार ये जो है ना, इस टाइप के जो सपने होते हैं ये मांग के पूरे नहीं होते, ये खुद करने पड़ते हैं, है ना। तो मैं, माय माइंड ड्रू ए ब्लैंक। आई हैड मेट 4-5 मिनिस्टर्स बाय देन एंड एक्चुअली उस टाइम तक ज्यादा कोई मतलब इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मेजर साहब, इतने में ही कहानी खत्म हो रही थी। तो लाइक नेवर गॉट एनी सॉलिड बैकिंग फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज काम भी नया था इस टाइप का, इंडिया में कभी किसी ने ऐसा किया नहीं था। ग्लोबली इट वाज a very rare kind of a thing we were doing. So it is understandable that people did not understand कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं and all that thing. But सुनने में अच्छा लगता था, तो लोग बहुत बढ़िया बोल के कहानी खत्म होती थी। So anyway, Bombay खत्म हुआ and I got fed up basically of asking things from other people, asking things from universe, things like that. So I took a break. मैं घर गया, अपने केरला में अपने मदर के घर पे गया और एक पूरा केस बियर खरीद के मैं अपने कारपेट पे बैठ गया, अपने मदर के कारपेट पे एंड वहां पे बेसिकली मैंने 3 दिन लगातार बियर पिया। सवेरे उठता था, बियर पीता था, खाना खाता था, सो जाता था एंड ऐसे ही करके उठता था, बियर पीता था, सो जाता था, उठता था, बियर पीता था, सो जाता था। 3 दिन लगातार मैंने बियर पिया और चौथे दिन मेरी आंख खुली और मेरे दिमाग में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आ चुके थे। बेसिकली मेरी आंख खुली और मेरे दिमाग में सोल्यूशन आ गया था प्रॉब्लम का कि we will create 3 world records in all the 3 elements of land, air and water, done by a team of people with disabilities coming from across the world, across culture, race, class, religion, nationality, economic status or ability, being trained by former special forces coming from across the world, क्या बोलते हैं, training them in skydiving independently, scuba diving independently and climbing a mountain independently. We will create these 3 world records and we will be able to through these, है ना, दुनिया, है ना, क्या बोलते हैं, दुनिया क्या बोलते हैं, चमकती हुई चीजों के पीछे भागती है ना। तो हमने बोला पैंचद ऐसा चमकती हुई चीज बनाएंगे कि सारा दुनिया भागते हुए आएगी और फिर दुनिया का बोलेंगे यार इधर तुम लोग, है ना, लाइन में खड़े हो जाओ, हम बताते हैं तुमको क्या करना है ना। तो बेसिकली द पॉइंट वाज दैट आई रियलाइज्ड कि यार ये स्कूबा डाइविंग में क्या हो रहा था, जब हम स्कूबा डाइविंग करा रहे थे जो पैरालाइज लोगों को, तो उस टाइम पे उनकी ना बहुत तगड़ी हीलिंग होना शुरू हो गया उनकी बॉडी में। ठीक है, you guys are technical guys from IIT and all, so if you research into hydrotherapy basically, and if you research into hyperbaric chambers and things like that and go into basically telomerase and things like that जो DNA में होता है and how it is connected to the healing and all that, basically जब हम लोग डाइविंग करा रहे थे because of the water pressure and things like that, बहुत भयंकर हीलिंग और बहुत स्पीड में हीलिंग होती हुई हमें नजर आनी शुरू हो गई। एक लेडी थी,
उसको हमने 5 बार डाइव कराया था और 5वीं बार बेसिकली हम लोगों को एक एक बार ही डाइव करा पाते थे क्योंकि टाइम कम था और लोग बहुत ज्यादा थे, हमारी टीम भी छोटी थी, पैसे भी कम थे, उस टाइप का कहानी था। तो पर एक लेडी थी वो चंडीगढ़ में, वो पहले दिन उसने डाइव किया और उसका मौका खत्म हो गया उसके बाद, पर वो रोज आके वो बैठे रहती थी पूरा दिन स्विमिंग पूल के साइड में डाइविंग देखते रहती थी। तो रोज शाम को जाने से पहले मैं उससे एक बार पूछ लेता, मैम आपको एक बार दोबारा करना है तो बताओ। तो एवरी इवनिंग शी यूज्ड टू डाइव एक्स्ट्रा विद अस। तो 5 बार द 5th इवनिंग जब वो हमारे साथ डाइविंग कर रही थी तो उनका जो एक टांग पैरालाइज था, करीब 6-7 साल से पैरालाइज था उनका वो टांग में सडनली हरकत आनी शुरू हो गई, वो टांग हिलना शुरू हो गया। तो आई वाज वेरी सरप्राइज एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज इन दिस दैट। तो मैंने काफी रिसर्च करना शुरू किया इसके बारे में एंड आई फाउंड आउट हाउ वाटर एंड हीलिंग अंडर वाटर इज लिंक्ड to basically body recovering internally and the mind also becoming calm and stable and healing basically happening. तो आई रियलाइज कि यार ये एक एक बार डाइविंग कराना, और दिस इज नॉट अबाउट एडवेंचर एनी मोर, दिस इज व्हाट आई रियलाइज, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग समवन फील गुड एनी मोर, दिस इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग वन प्रॉमिस किया, मैंने एक बंदे को वादा किया था उसको डाइविंग कराऊंगा तो मैं अभी करा रहा हूँ। इट वाज नॉट अबाउट दैट, व्हाट आई रियलाइज इज दैट इट इज अबाउट healing for people with these kind of issues, people with disabilities, paralyzed people and even able-bodied people. Diving का impact बहुत खतरनाक होता है psychological level पे, it is खतरनाक in the sense very good खतरनाक level पे होता है। it heals your mind, and if your mind is healing and mind reaches a meditative kind of state, your performance, your internal health, wealth, everything gets affected very positively. सो कहानी ये है ले देके कि मुझे ये समझ में आया कि यार ये चीज ना इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए। डाइविंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड ओपन एयर एक्टिविटीज इन नेचर एंड थिंग्स लाइक दिस शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर पीपल बिकॉज इट इज लिंक्ड टू हीलिंग एंड अ बेटर लाइफ। तो अब उसका पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसे होगा, अभी मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए ये वो तो है ना कहीं से सपोर्ट नहीं आ रहा था। सो दैट्स व्हाई आई हैड गॉन होम, I was stuck. I did not know what to do. I did not want to keep asking people, and I did not have the resources myself. So I had that beer for 3 days, and 4th day in the morning, the solution to this quantum problem was there in my mind. Quantum solution, है ना? क्या कहते हैं? 3 world records in land, sea, and air, and all the 3 elements by a global set of people with disabilities being trained by former special forces coming from across the world to do it independently. ठीक है? तो ये प्लान आया मेरे दिमाग में, एंड इट वाज आई रियलाइज दैट विद द पावर ऑफ दिस इवेंट आई विल बी एबल टू कलेक्ट whatever it is I need, be it network capital, be it financial capital, whatever it is, I will be able to collect all of this energy and create the institutions that I wish to create, right? So I called up my team, मैंने पूरी टीम को फोन किया, सबको एक एक करके कि भाई मेरे दिमाग में आया है 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? तो पूरी की पूरी टीम ने सीधा सीधा बोल दिया, साहब बड़ी आइडिया बहुत तगड़ा है, करते हैं। विदाउट ए सेकंड थॉट दे ऑल सेड, देयर वाज नेवर दिस डाउट कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डाउट कभी आया नहीं हमारे दिमाग में। बस सीधा था यार ये करना है और इससे क्वांटम सॉल्यूशन मिलेगा इतने बड़े प्रॉब्लम का, तो कर देते हैं। सो वी जस्ट डिसाइडेड टू डू इट एंड वी स्टार्टेड ऑफ। तो ये है, हमने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है अभी सियाचिन ग्लेशियर में, लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है। वी ट्रेन क्रॉस इंडिया, हमने क्या बोलते हैं, आवर जर्नी हैज बीन मैजिकल, मिराकुलस, ठीक है। वी लिव, देयर आर वेरियस डिमेंशंस दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन ऑपरेट in this reality. So in a certain way of life, in a certain thought process, in a certain dimension of life, if you are following your heart and you believe in yourself and what you are doing, the universe will align and support you in your journey. So and that is मतलब it's very miraculous, मतलब कोई 2 + 2 = 4 पे नहीं चले हम, है ना, 2 + 2 = 20 पे चलते हुए आए हैं हम। तो ये है, and that is also a reality, it is a fact, है ना, that is how it is actually a fact, it is not a magical thing, or it's not a actually कि ये भ्रम नहीं है, है ना, ये सत्य है
कि अगर आप एक तरीके के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, जितना आप फेंकोगे और साफ दिल से फेंकोगे और मतलब जो भी अपना सपना पूरा करो, साफ और खराब छोड़ दो। अगर आपका आपका सपना यूनिवर्स के लिए अच्छा है तो यूनिवर्स आपको जो आपको सपना पूरा करने के लिए चाहिए वो देगा, और जहां जहां से आएगा मतलब आपको फटाक से काफी जल्दी समझ में आ जाएगा कि दैट this world that we live in, this universe that we are alive in, and and who we are basically like quantum beings. We are magical in nature. We can experience a magical life. Everything is not 2 plus 2 equal to 4. Sometimes 2 plus 2 equal to whatever, 40, 20, whatever. ठीक है, तो ये है मोटा मोटा, ये है। फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। वी डिड अ पूरा अक्रॉस इंडिया हमने we did a participation campaign. A lot of people with disabilities, hundreds of people with disabilities applied to us. We are not here to do the impossible. ठीक है, कि हम है ना मतलब कुछ जो किसी किसी को खतरे में डालने का वो नहीं है, बट क्या है, we are here to do what is possible, है ना। what is possible has not been only done, तो impossible तो बाद में है ना, बाद में देखने वाली बात है। what is possible by human beings getting together and organizing themselves behind a target and putting their energy to execute that target, lot of things are possible, है ना। impossible क्या है वो अभी तक पता नहीं, है ना, चलते चलते पता लग जाएगा, देखेंगे जब आएंगे वहां पे। तो क्या कहते हैं, so far so good. We trained ले देके फिर finally we called 20 people in to Delhi. हमने there were people who are 100% visually impaired or blind. There were people who were leg amputees. There were people who were upper limb amputees. तो ऐसे करके काफी अलग अलग वो थे, बट हमने एक लिमिट सेट किया था कि वी विल नॉट टेक स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। जो लोग वेस्ट डाउन पैरालाइज वगैरह हैं उनके लिए माउंटेनियरिंग इज नॉट द गेम राइट नाउ. At some point in the future, yes, when we have developed that kind of capability in terms of exoskeletons and various other kind of assistive technology and that kind of healing, then we will open up all frontiers. We will leave nothing unturned, है ना. But for now we selected a certain set of कि ये लिमिट है, इतना लिमिट हम कर सकते हैं, यही नहीं हुआ है आज तक. तो वी ट्रेन एंड देन आउट ऑफ दोस बेसिकली हमने 20 किलोमीटर का स्पीड मार्च किया दिल्ली में, एंड वाज सच अ थिंग. आप लोगों को कभी वीडियो है ना वो रिलीज होगा तब दिखाएंगे. You should have seen there was this blind girl, okay, 100% blind, and Angmo करके. She was a young girl and she was actually the fittest. उसको हमने एक पेसर दे रखा था, वो पेसर की आवाज सुनते 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 पीछे भागती पूरा 20 किलोमीटर. शी रन लाइक दैट, है ना, सुन सुन के आवाज सुन सुन के. ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. ठीक है, इट्स वेरी वेरी रियल. तो वी हैड अ पर्सन बेसिकली जिसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था. 24-25 साल का बंदा था, उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था. क्रॉस कंट्री वगैरह भागता था, मैराथन भागता था, और बाइक एक्सीडेंट में वो वेस्ट डाउन, बेसिकली उसका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, और वो पैरालाइज हो गया था वेस्ट डाउन. बट क्या कहते हैं, over a period of between a period of 1.5 years he went through various alternative healing practices, है ना. मतलब क्या बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये वो काफी कुछ ये वो, एंड in within a 1.5 years time he was back on his feet and he basically ran a 90 km 90 kilometer ultra marathon in Uti and gave the second best timing in India. Abhi recently he has completed a 555 kilometer ultra marathon, है ना. तो इस टाइप के, so phenomenal healing. So all these things are possibilities if we employ our energy and our mind and our intellect and our heart behind these kind of things. The world will open up like a flower. So ये था. तो we basically saw all these things, we trained them. 20 किलोमीटर स्पीड मार्च खत्म हुआ, we shortlisted. तब तक क्या बोलते हैं, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पर सिलेक्शन चल रहा था. एंड 7 दिन पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड से 7 दिन पहले somebody got in touch with us from Mahindra Group, and उन्होंने सुना हमारे बारे में, got in touch, and he called up Mr. Anand Mahindra in US, and आनंद महिंद्रा ने 5 मिनट में बोल दिया इनको जो चाहिए इनको दो सब कुछ दो इनको. तो ऐसे करके तो we landed, basically we got, and मौके पे they gave us गाड़ियां उन्होंने, हमने basically we wanted to drive from Delhi to Siachen Glacier, है ना, road trip, and then train second phase of training in Siachen base camp, and then third phase basically climb up, create the world record and come down.
तो लास्ट मिनट में जो हमें चाहिए था सब कुछ लास्ट मिनट आया है, पर आया है और पूरा है। ठीक है, हम लोग चलते रहते हैं, जो हमें चाहिए होता है, इट्स लाइक अ फकिंग वीडियो गेम, यू कीप वॉकिंग एंड आपको रास्ते में वो मोर लाइव्स एंड मोर मनी एंड मोर वेपन्स एंड मोर एम्युनिशन एंड इस टाइप का मोर एनर्जी मिलता रहता है। एज लॉन्ग एज यू कीप वॉकिंग, यूनिवर्स विल कीप वॉकिंग विद यू एंड गिव यू व्हाट यू नीड व्हेन यू नीड इट। सो ऐसे हमारी जर्नी रही है और ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही मजा आ रहा है। आई लाइक लिविंग लाइक दिस। सो क्या कहते हैं, एंड देन we drove, sports minister, social justice minister got involved. He inaugurated our this thing in Delhi and बड़े बड़े लोग आए और काफी publicity हुआ, जो भी है कहानी। And we from there we drove across from Delhi to Siachen Glacier and camped in various places, and then reached Siachen Glacier. We conducted the second phase of training there in Siachen Glacier base camp, and फिर हमने 9 days का expedition किया. 5 days we went up to Kumar Post and created the world record and came down. 9 days के timing में हमने we basically went into high altitude in Siachen Glacier and did it and came back and drove back to Delhi and expedition over. So this is more or less been the journey. The core concept which has crystallized around this journey is, लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बता देना यार, ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? No, sir. तो क्या कहते हैं, so anyway, the core concept is when I realized कि यार there is so much of ancient Indian healing practices, there's so much of wisdom that is already concentrated in our nation. If we can tap into this ancient wisdom that we have got, and we create new systems around it using new technology and new thought process, new mindset, if we can find a system or a connection between the past, our ancient past, and our present high state of evolution that is happening right now, इन दोनों को merge कर दिया जाए और बीच में एक system हो where people like us can get together, specialized people coming from across various fields. If we get together and we research into disability, we'll find the key to human ability. Basically, it is my belief that human beings are potential gods. We can basically do anything with our bodies, and we can do anything in our minds with our minds. It is a way of unlocking it, है ना? ये पुराने जमाने में योगी पार्टी वगैरह होता था, जो पहाड़ पूड़ चढ़ते थे, है ना, और वहां जाके गुफा में बैठ जाते थे और, है ना, 50 साल 20 साल 100 साल 200 साल जो भी है मेडिटेशन करते थे, एंड दे यूज्ड टू गेन सिद्धीज और व्हाट, है ना, सुपरनैचुरल पावर्स एंड ऑल. सो दैट इज वन वे आई रियलाइज इन माय जर्नी की वो भी एक तरीका है अगर आपको सुपरमैन बनना है तो. अदरवाइज क्या बोलते हैं, पर क्या है, यू आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड देयर, है ना, यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर लव्ड वंस, यू आर कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, है ना. आपको बेसिकली अपने आप को शुद्ध करके बैठना है, तब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा. व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन इज बेसिकली रियलाइजिंग व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, है ना, व्हाट यू वांट, थिंग्स लाइक दैट. तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, क्या बोलते हैं कि, है ना, जो मन है ना, जो मन में है वो करेंगे और मजा भी आएगा. And the joy of this world is to interact with each other, yeah, to collaborate with each other. You have got some skill, I have got some skill, you have some energy, I have some energy. We combine that fucking energy in one direction. We can penetrate anything, create the realities that we want to experience. So the world is a moldable place. You can choose your realities and things like that. तो ये बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आनी शुरू हो गई थी, एंड मैं उस पर भरोसा करता गया और चलता गया और चलता गया और चल रहे हैं. So it is not about where we are going to reach, but it is about how we are living our life in the now. That's what's like important to me and to our team. That's it. So if anything else anybody wants to ask, yeah. So one last thing I wanted to finish is the point about this whole institutions that I said we are creating something called the human ability biomes. I normally know kya bolte hain, I was very interested in this talk to IIT because you guys have got a lot of, you guys are growing up into kya bolte hain, you're going to go into various fields across the world and into various sectors. So kya bolte hain, you guys are going to specialize in a lot of things, है ना, and cutting edge. And kya kehte hain, so I wanted to present the concept that we are working on. It's something called the human ability biome. Basically a place based in nature, in natural surroundings, natural food, natural, air, water, जंगलों में and पहाड़ों में, basically creating a base where
people with disabilities and able-bodied people, both can come. जो इंसान इस दुनिया में चल रहा है, दिक्कत तो सबको है भाई. किसी को मेंटल लेवल पे है, किसी को इमोशनल लेवल पे है, किसी को फिजिकल लेवल पे है. These, what are these दिक्कत है ना, ये प्रॉब्लम्स क्या है? These are problems which basically stop you from exploring your full potential, है ना. तो क्या बोलते हैं, so these human ability biomes, that is the concept where anyone can come and basically experience a way where they can start finding their own full potential, be it at their mind psychological level, be it at an emotional level, be it at a physical level, and combine all three. But basically perception shift of your view of what life is all about. So that done through various rehabilitation techniques, through various healing techniques, reskilling, and in the background, जैसे हमने अभी जो लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, तो जितने लोगों ने हमें अप्लाई किया था, उनमें से जिनको हमने सेलेक्ट किया था, so we tested them for their psychological state of being, we tested them for their physical status. We have a team of basically scientists and doctors and psychologists and things like that. So we got a team like that, so we created a format where we could capture data. So जिन लोग को हमने सेलेक्ट किया था, उनके घर बिफोर दे केम टू अस, उनकी स्टेटस क्या थी, व्हाट इज देयर फिजियोलॉजी, बेसिकली उनके बायोलॉजिकल पैरामीटर सारे जितने हम मेजर कर सकते थे वो किए. उनके साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, व्हाट इज देयर स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट इज देयर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, हाउ डू दे फील अबाउट लाइफ, थिंग्स लाइक दैट. ये सारी चीजें हमने रॉ डेटा कैप्चर किया जब वो घर पे थे. देन जब वो दिल्ली आए हमारे पास और हमने उनका 20 किलोमीटर का स्पीड मार्च का टेस्ट लिया, उसके बाद हमने दोबारा मेजर किया. फिर जब वो ग्लेशियर में पहुंचे और उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई, फिर हमने दोबारा मेजर किया, और फाइनली जब वर्ल्ड रिकॉर्ड खत्म करके वो वापस आए तब हमने दोबारा मेजर किया. सो बेसिकली वी वर ट्राइंग टू कैप्चर कि जब हीलिंग होती है बॉडी में एंड द माइंड स्टार्ट्स चेंजिंग, व्हेन योर थॉट पैटर्न स्टार्ट चेंजिंग, योर न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट्स चेंजिंग, how these changes happen, how a person can be taken from a negative perception of life to a positive perception of life. Ultimately that's what matters. If you think your life is it's great to be alive and you have opportunity, you feel good about life, your life will open up like a lotus. And if you feel that life is a fuck all place, पता नहीं किस लिए पैदा हो रखे हैं, क्या चल रहा है, पता नहीं क्या है ये वो, पैसे कहाँ से आएंगे, है ना. तो है ना, ये सब चीजें होती हैं. तो उसके बाद it's a negative perception. If you are feeling like you are in a trap, your life will be like a trap. If you are feeling you are God's own child, then you will start feeling like God only, है ना. So it's just a perception, but this perception of viewing life like this or viewing life like that is linked to your emotional state of being, your psychological state of being, your physical state of being, and it is linked to what do you really know about reality. ठीक है. So this kind of thing. So this is the main purpose behind Operation Blue Freedom. A is to change the perception of the world, है ना. 99% of people in this world have not skydived or scuba dived or done mountaineering and all, and when they see that people with disabilities, paralyzed people are able to scuba dive independently, there are people who are paralyzed waist down are able to jump out of aircrafts and skydive independently, when they can see that blind people who have leg amputees, एक टांग नहीं है, दो टांग नहीं है ना, पहाड़ चढ़ रहे हैं, है ना, if they can see that, it will open up the perception of the world. When they will see, so we are filming our entire journey, है ना. It will open up the perception of the world कि what is possible and what is truly possible. कि इंसान अगर करने पे उतर आया ना तो फिर वो क्या कर सकता है, right? How he can open up his world. It is not you against the world, it is you against your own mind. That's it. So I would suggest कि don't waste your time trying to find fault in the world. Those faults are there so that you can unleash yourself, you can uncover yourself, you can open up your chest and see what's there inside of you. ठीक है. So like that. So ये है. So yeah, so that's the thing, that's what we are after. Yes, sir. So I am speechless after this really inspiring journey of yours, sir. So I would like to touch upon every aspect of this journey one by one. First, I will take you back to your IMA days. So one question which I have is that the training in NDA and IMA is really tough. We all know that. So after enduring that tough training of 2-3 years, why does one volunteer for special forces?
knowing that the 3 month probation is equivalent to hell. So what was your motivation behind this? And yeah. Okay. Yes, NDA training is tough. It's very 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 tough. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आ रहा था और वैसे ही मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टाइप का बंदा था, तो बट स्टिल आई फेल्ट द टफनेस ऑफ द ट्रेनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. तो जो लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से आते हैं या होता है, उनके लिए तो काफी मुश्किल होता होगा. ठीक है, बट क्या होता है ना, ये दोस्त होते हैं यार, है ना. एवरी लाइफ इज टफ यार. क्या क्या कॉलेज में टफ नहीं होता है? क्या आईआईटी मस्ट बी टफ यार, है ना. रैगिंग चलती होगी, कुछ कुछ चलता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा. ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ती होगी, बहुत मेहनत करना पड़ता होगा. बट क्या होता है, दोस्त होते हैं, है ना, संगति बन जाती है ना, हंसी मजाक में टाइम निकल जाता है. ठीक है, तो यस इट इज टफ, बट दैट इज नॉट द एनडीए वाज टफ. एंड देन why did I join special forces? I joined special forces, very simple thing यार, कि क्या कहते हैं, जाना था लड़ाई में. ठीक है, I was going to go into combat. I was joining the Indian Armed Forces. That was my profession now, है ना. And in that profession, basically special forces is the best of the best of the best. So जब मैं by the time 6th term एनडीए खत्म कर रहा था, तब मैंने एक ही चीज सोची थी यार, कि अगर लड़ाई में जाना है, अगर ये काम करना ही है, तो one should go to war, you know, with the best weapons. One should go to war with the best equipment. One should go to war with the best team, and one should go to war with the best mandate, है ना. कि जो साला पूरा ग्राउंड खुला होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, है ना. आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, है ना, बट आई शुड गेट ए होल फील्ड टू प्ले, है ना. तो लेवल 1 लेवल 2 नहीं खेलना है, लेवल एक्स खेलना है, बिल्कुल सीधा. सो दैट वाज इट, कि जाना ही है लड़ाई में, मारकाट ही करना है, ये सब ही चीज है, प्रोटेक्ट नेशन एट दिस लेवल, यही सब करना है, तो गो टू द हाईएस्ट लेवल यार, गो टू द हाईएस्ट लेवल. दैट्स इट. दैट वाज, be with the best people, be have the best equipment, have the best training, and have the best mandate. That's why I volunteered for special forces. Yes, sir. Really inspiring, sir. So, like, next question which I have is that what does it take to like qualify probation? Like, what mindset do you need to qualify it? What mindset do you need? To qualify probation. क्या होता है बेसिकली प्रोबेशन ना, प्रोबेशन में हम में सिलेक्ट कौन होता है. ठीक है, जो आते हैं हम उनको पहले ही रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं, सब रिजेक्ट होते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिजेक्शन, है ना. एवरीबॉडी इज फेल. whoever passes has to prove himself. हमारी तरफ से सब फेल होते हैं. ठीक है, तो ऐसे शुरू होता है. तो क्या होता है कि वी पुट देम थ्रू वेरियस प्रोसेसेस एंड फिल्टर्स बोल लो, है ना. वी पुट देम थ्रू वेरियस प्रोसेसेस एंड फिल्टर्स इन विच दे गेट ट्रेन्ड आल्सो. एंड है ना, अंदर की आत्मा का स्टेट पता लग जाता है, उसको भी पता लग जाता है और हमें भी पता लग जाता है. ठीक है, बेसिकली क्या है, इट इज ऑल, एनी सिलेक्शन प्रोसेस is defined by what that organization is supposed to do, है ना. So as far as 9 para special forces was concerned, or special forces of our country is concerned, or special forces of any country is concerned, it is supposed to be, it is mandated, officially mandated to do the impossible. जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तब हमें बुलाया जाता है. ठीक है, तो ये है कहानी. तो क्या है वो, उस टाइम पे यू हैव टू बेसिकली बी केपेबल ऑफ डूइंग द इम्पॉसिबल विदाउट एनीथिंग, है ना. तो व्हाट डज दैट टेक? इट टेक्स सेल्फ बिलीफ यार. इट टेक्स सेल्फ बिलीफ. इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड. पर बंदे को भगा भगा के रगड़ा दे दे के आप फिजिकल स्टैंडर्ड बना ही दोगे यार. बॉडी है, उसको चेंज कर देंगे, मोल्ड कर देंगे. ठीक है, even the mind, the psychology of a person can be shifted given a period of time. But the heart, the spirit which believes in itself, which is aware of itself, यार फेल या पास के लिए नहीं जाते हैं, है ना. जब हम लोग जाते हैं कि यार कि फेल होंगे या पास होंगे, हमें करना है बस. तो जो करने आता है वो कर जाता है यार, बस यही है. तो क्या होता है, दो फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज सो दैट पीपल लाइक अस ओनली गेट सिलेक्टेड. इट्स लाइक दैट.
हमारे यहाँ भी है, नो सिस्टम इज परफेक्ट, है ना, वी हैव आवर इश्यूज आल्सो, वी आर आल्सो इवॉल्विंग, एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ एवोल्यूशन, एवरीथिंग इन अ स्टेट ऑफ चेंज टुवर्ड्स एवोल्यूशन, तो और डिस्ट्रैक्शन, तो क्या कहते हैं, सो या, so we also have our issues and all that, but we learn every day. 9 para SF is constantly in a state of evolution, that is our permanency. We are changing constantly, every hour, every day we are evolving, and that is our constant state of being. There is no change in that, we are constantly evolving. So ये है, so for that it requires a heart, it requires certain self belief, it requires a certain realization कि मेरे को यही करना है यार, मेरे को करना यही है बस, तो जो वही करने आता है वो फिर हो जाता है, ये है. I hope I've been able to answer your question. Am I audible? Yeah, I can hear you. Hello? Okay. Yeah, am I audible? Yeah, I can hear you now. Yeah, sure. So yeah, I understood that. So answer this question only if you are comfortable answering it. So like what I wanted to ask was that would you mind sharing like any event from your probation which stayed with you, like only if you are comfortable and you want to answer it. Yeah, I can give you example. मैंने शायद पहले भी दिया हुआ है, पता नहीं मेरे को ना. प्रोबेशन में क्या होता है ना, टास्क मिलते हैं, कोई भी काम मिल जाएगा, ये करके आओ, वो करके आओ, ये दिखाओ, वो करो, वगैरह वगैरह वगैरह. आपकी बेसिकली नींद उड़ा देते हैं, यू गो थ्रू डिप्रीविएशन ऑफ स्लीप एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन, दिन भर रगड़ा चलता है, ये चलता है, वो चलता है, एंड देन यू आर गिवन टास्क. जब आप सोच रहे हो कि बस यार मैं एक कदम और नहीं ले सकता, तो आप बोल देंगे चल यार 40 किलोमीटर भाग के आ जा, 20 kg का पिट्ठू पकड़ा देंगे, बोले 40 करके आ जा. That is when you are actually at a point, they'll watch you, you know, probation में हम देखते हैं कि आदमी को वो, we are watching for your limits basically, कि आपका दिमाग कहाँ बोलता है कि यार कहानी खत्म हो गई है, वहां पे हम पहुंचते हैं. जब आपकी कहानी खत्म हो गई होती है आपके दिमाग में, तब हम पहुंचते हैं और फिर आपको नई कहानी बताते हैं कि यार ये नई कहानी है, 40 किलोमीटर दूर है, करके आ जाना, ठीक है, फिर बात करेंगे. तो क्या होता है, आदमी फिर उस टाइम पे क्या होता है ना, बॉडी तो खत्म हो गई है, माइंड भी खत्म हो गया है, बचा क्या है, आत्मा बची हुई है, ठीक है. Now that Atma is going to fucking decide whether it is going to go for a 40-kilometer speed march with a 20-kilometer rucksack or not. तो हाँ या ना वही का वही निकल आएगा, ठीक है. प्योर हो जाता है आदमी बेसिकली उस टाइम पे ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का एनर्जी बचा होता है. सो क्या कहते हैं, आदमी प्योर हो जाता है और फिर आदमी का प्योरिटी वहां निकलता है, बोलता है हाँ मैं करूंगा, और जब निकलता है वो बाहर करने के लिए, या फिर बोलता है हैंड अप करता है, बोला हो गया अपना, कहानी खत्म, मेरे को नहीं बनना स्पेशल फोर्सेस, कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है. सो इंसिडेंट इज लाइक दिस दैट वन ऑफ लाइक, मैं पीछे मुड़ के, दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी फन, बट व्हेन आई लुक बैक नाउ इट इज फन. सो मेरे को एक दिन बुलाया किसी ने ना, सीनियर ऑफिसर ने बुलाया 9 पैरा में, बोलता है ना एक सांप पकड़ के लेके आओ. तो मैं बचपन से सांप के साथ खेलता रहा हूँ, है ना, पाले भी हैं, ये भी है, तो मुझे सांपों के बारे में पता था बहुत कुछ. तो ये था जनवरी का महीना था, बहुत सर्दी थी JNK में, और मैंने उनको बोला सर इट इज जनवरी, इट इज विंटर्स, स्नेक्स विल बी हाइबरनेटिंग एट दिस टाइम, है ना. तो उसने सोचा, तो उसने बोला कोई बात नहीं यार, तो लेके आ, सांप लेके आ जा. अब मैं 9 पैरा में या किसी भी प्रोबेशन में एक्चुअली क्या होता है ना, इट इज सिंपल एज दैट, आपको काम मिला, आपने वो काम नहीं किया, आप घर जा सकते हैं, बाय बाय, इट्स लाइक दैट, ठीक है. देयर आर नो एक्सक्यूजेस. तो अब नो भी नहीं बोल सकते. मैंने उसको बताया हाइबरनेशन चल रहा है, विंटर चल रहा है, फिर भी, है ना, देयर वाज नो मर्सी. तो मैं सोचा यार अभी सांप कहाँ से लेके आऊं. फिर मैंने सोचा यार सांप नहीं, जंगली सुअर मिल सकता है, जंगली सुअर लेकर दिखा देता हूँ, बोलेगा एफर्ट इज सेम ओनली, है ना, तो शायद छोड़ देगा. फिर मैंने सोचा उसके बारे में, बोला नहीं यार, बोला सांप है, और सांप की जगह जगह अगर मैंने जंगली सुअर दिखा दिया तो मुश्किल होगा, ठीक है, फेल कर देंगे, बिकॉज व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर आई हैव नॉट डिलीवर्ड, है ना. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार सांप, आई वेंट इनटू सॉल्यूशन मोड, ठीक है. मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि कैसे हो सकता है, ठीक है.
तो पहला मैंने सोचा यार सांप 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 कहाँ होता है, किसके पास होता है सांप? सांप होता है जो जू में होता है, जू में, है ना। तो जू में सांप होता है, तो मैंने बोला यार जू, तो देखा यार इस पूरे इलाके में जू नहीं था। फिर मैं बोला अभी क्या, और ये मेरे को शाम को टास्क मिला था और मुझे सुबेरे दिखाना था, पीटी से पहले मेरे को सांप दिखाना था इनको। तो मैंने बोला अच्छा, तो जू में तो नहीं मिलेगा क्योंकि जू है नहीं यहाँ पे। फिर सांप किसके पास होता है? सपेरे के पास होता है, डब्बे में डाल के घूमते हैं इधर उधर, है ना। तो बड़ी सपेरा कहाँ से ढूंढूं, ठीक है, बड़ा सोचा। फिर मेरे लास्ट में दिमाग में आया यार सांप तो लेबोरेटरी में भी तो होता है सांप, है ना। आपने देखा नहीं है लैब में अपना, कौन सा लैब होता है ये, बायोलॉजी वाला लैब, उसमें क्या बोलते हैं, ग्लास जार्स में कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड में डाल के रखते हैं, सांपों को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। तो हॉस्पिटल में होता है ये लैब। तो वहां पे कमांड हॉस्पिटल था, तो मैंने बोला, मैं कमांड हॉस्पिटल गया रात को, और उनका डायरेक्शन पूछता पूछता मैं लेबोरेटरी में पहुंच गया कमांड हॉस्पिटल के उसमें। और वहां पे जो हवलदार साहब थे, मैंने उनको बोला कि यहाँ पे आपके पास सांप है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ है। तो उसने मुझे को ले गया एक कमरे में, दिखाया टॉप शेल्फ पे तीसरे नंबर पे, बाएं दाहिने से तीसरे नंबर पे एक बड़ा सा जार था, उसके अंदर एक बेसिकली पॉइजनस स्नेक था, क्रेट करके डेड था, इट वाज प्लेस्ड इन फॉर्मेल्डिहाइड, उस जार में बंद था। तो मैंने उसको बोला मेरे को ये एक दिन के लिए दे दो सांप। तो उसने मना कर दिया कि भैया ये सब नहीं दे सकते आपको, आप यहाँ से मार्च कर जाओ। तो फिर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होके बाहर खड़ा हुआ था, बिल्डिंग के बाहर तूफान चल रहा था, बारिश हो रहा था, लाइटनिंग हो रही थी, और मैं सोच रहा था कि क्या करूं, और तभी पूरी बिल्डिंग में लाइट चली गई। तो मैं चुपचाप से वापस घुमा, दीवार के साथ हाथ लगाते 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 उस कमरे में पहुंचा, फर्स्ट शेल्फ, सेकंड शेल्फ, थर्ड शेल्फ में, तीसरा लेफ्ट से उठाया वो जार और गायब। सो और वापस यूनिट गया, और मैंने अपने जिसने मांगा था सांप उसको दिखाया कि वेरी प्राउडली आई शोड हिम द स्नेक। तो उसने मेरा बहुत बहुत बनाया उसके बाद। बेसिकली ही वांटेड टू सी लाइव स्नेक बट आई गॉट अ डेड स्नेक, है ना। तो मैंने बोला सर ये तो आपने बोला नहीं था कि जिंदा या मुर्दा। बट सो लाइक दैट, प्रोबेशन इज लाइक दैट, समटाइम्स इट्स फन। तो या ऐसे बहुत बहुत प्रोबेशन इज फुल ऑफ स्टफ लाइक दिस। Yes, sir. काफी इंटरेस्टिंग था. So sir, like I have watched a lot of your interviews, and in most of your interviews, you have used this term called special forces mindset. So can you elaborate on that? Like, what is it? Like, what is the special forces mindset? ओके, तो ये चीज जैसे मैं आपको बता रहा था कि यार क्या होता है, माइंड सेट हो गया, या योर बॉडी एंड योर माइंड is a outcome of your experiences, and ultimately it is an outcome of your spirit, of your deep knowledge of what you are, है ना। कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ा बॉडी बॉडी होगा, बच्चा आके थप्पड़ मार जाएगा तो दो बार सोचेगा यार कि मैं वापस मारूं नहीं मारूं, है ना। कुछ लोग पतला सा सुक्कड़ सा होगा, बड़ी जाके 10 लोगों को खड़ा होकर बोल देगा कि बैंचो उल्टा टांग दूंगा तुम लोग सारों को, है ना, कोई गलत काम चल रहा होगा तो, राइट। सो इट्स लाइक दैट, इट इज अ स्पिरिट इनसाइड, है ना, नॉलेज ऑफ दैट स्पिरिट, that power within the spirit, that power is basically awareness of yourself. So special forces mindset comes from a spirit like that, basically पूरी दुनिया को, है ना, विदाउट जजमेंट देखना, है ना, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बड़ा कौन है छोटा कौन है ना, ये सब चीजें साइड में, टू just to see the world as it is, and know that what you want to do in this world you can do it. So that is it. इसके बारे में मैंने एक बार लिखा भी था, I'll just read it out to you, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. It's Sure. Yeah, just give me 1 second, I'll just read it out to you. Yeah. Okay. मैं सुबह ही किसी को पढ़ के सुना रहा था, ये किसी ने यही चीज पूछी थी मुझसे.
So I'll tell you. So special forces is an instinct. Okay? Every human being has it. It operates from a mind space where faith, self-realization, skill, brotherhood, ability, and freedom. These are the driving factors of focused thought and effective action. Over time, it develops into a razor sharp, survive, stabilize, and thrive mindset by enduring life's extreme challenges repeatedly, by chance or by choice, eventually realizing that you can conquer anything. People who live on the cutting edges of humanity operate from this mindset. In this case, people with disabilities, the veterans and skilled people and visionaries from across the world who are coming together to make this dream project a powerful reality. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है, it is linked to what we are doing. So I'd explain it like that. What we are doing is impossible, and 3 world records in all the 3 elements by people with disabilities, paralyzed people, diving independently, mountaineering independently, skydiving independently, researching into human ability, ये वो this that, है ना, with no money, है ना, started out with fucking nothing. ठीक है? तो it is in our real world, the world, it is impossible to do something like that, है ना. दुनिया जाके कॉन्सेप्ट बनाएगी, मेहनत करेगी, स्टार्टअप करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, पैसा ढूंढते रहेंगे, है ना. 10 साल 5 साल पता नहीं कुछ जो भी है, 50 लोगों के सामने जाके, है ना, दे विल प्रेजेंट दैट हम लोग का आइडिया इतना अच्छा है, इसमें पैसा लगाओ. तो पैसा लगाते हैं लोग और फिर वो आइडिया बढ़ता है, चलता है या नहीं चलता है, जो भी है. So we didn't go that route. We just said कि करना है तो करेंगे. अच्छी चीज है. My heart believes in it. My spirit believes in it. My mind already knows whatever I believe in. The question of whether I can do it or not do it does not arise only. If my heart believes in it, there is no doubting कि ये होगा या नहीं होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है. मेरा काम ये नहीं है कि सक्सेस एंड फेलियर देखना. मेरा काम है करना. जिस चीज में मेरी बॉडी, मेरी लाइफ, मेरा माइंड, my fucking life, right? If I believe I can do something, I will do it यार. अब वो होगा या नहीं होगा ये तो भगवान के ऊपर है, संसार के ऊपर है, किसी और के ऊपर होगा, पर करना या नहीं करना मेरे हाथ में, उतना तो मैं करूंगा ही करूंगा. So that's it. ठीक है? So that's a mindset. So basically special forces is a mindset. Everyone has it. It's an instinct. Basically spirit based है. ठीक है? हर इंसान के पास होता है ये. हर इंसान, है ना. ये कहाँ होता है? ये होता है जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा है, अपने बारे में समझ है, उसके पास कोई स्किल है. ठीक है? लकड़ी काटने से लेकर, है ना, बर्तन साफ करने से लेकर, साला रॉकेट बनाने तक लेकर, जो भी स्किल हो, पर उस स्किल में वो स्पेशलिस्ट है. ठीक है? ब्रदरहुड है ना. आपस में अकेला आदमी कुछ कर सकता है, पर जब उस टाइप के बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, यस, ऑन आवर ओन वी आर वेरी केपेबल, बट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर फकिंग आउट ऑफ दिस यूनिवर्स. ठीक है ना. So we operate in the interdimensional space. We can go and knock off anything, anywhere in other realms also. ठीक है? So it's like that. We believe that. ठीक है? तो ये है. Sir, just a question that are you, as you were in the 9 para SF, one of the most popular unit of the para SF, and it is also the one involved in many dangerous operations. सर कभी आपको डर लगा है क्या? और सर जब अगर आपको डर लगा था तो आपने क्या किया? मतलब अगर किसी डेंजरस ऑपरेशन में, तो आपने कैसे हैंडल किया उसको? डर को यार समझना चाहिए पहले तो कि डर है क्या. डर इज बेसिकली योर इंस्टिंक्ट्स फायरिंग ऑफ. ठीक है? इट इज योर सिक्स सेंस वगैरह. ठीक है? योर बॉडी गोइंग इनटू फाइट और फ्लाइट मोड. बेसिकली एड्रेनल पंप आता है. ठीक है? तो व्हेन फियर इज प्रोड्यूस्ड, फियर इज बेसिकली व्हेन योर बॉडी और योर माइंड और बोथ इज एबल टू प्रेडिक्ट दैट की बैंच बहुत कुछ उल्टा होने वाला है अभी, है ना. चोट लग सकती है, मौत आ सकती है ना, या किसी और के साथ कुछ गलत हो सकता है. सो योर फियर कम्स इन. So when the fear comes in, there is a certain state of realization where you can look at fear, understand it, you can feel it, but it cannot paralyze you. You can see it. The more the fear, the more actually हमारे साथ क्या होता है, जब fear आता है तो जितना fear बढ़ता जाता है उतना हमारी execution capability की एनर्जी बढ़ती जाती है और उसकी शार्पनेस बढ़ती जाती है, उसका फोकस बढ़ता जाता है. ठीक है? तो दैट्स हाउ फियर ऑपरेट्स फॉर एवरीवन. बस लोगों को पता नहीं होता है. लोग सोचते हैं कि यार मैं डर बन गया हूं, पर आप डर नहीं बने हो, आप डर को फील कर रहे हो. डर इज अदर देन यू. ठीक है? सो व्हेन वी फील फियर, we automatically look for what is it that is making us feel fear.
देन वी सी अच्छा ये है, चल इसको खत्म कर देते हैं, है ना, तो बस ये खत्म कर देते हैं उसको। तो ये है, you basically address the issue, whatever, wherever that fear is coming from, you understand it, that it is being caused because of a certain situation, circumstance, ठीक है, so you are able to analyze that very clearly. You're basically, because of the fear, there is adrenaline pumping in your body, your mind has fucking focused to a pinpoint, है ना, तो क्या बोलते हैं उसके बाद, क्या बोलते हैं, you are ready to take action very very quickly, very very forcefully and very very decisively. You can take decisive action, है ना, एक ट्रिगर दबेगा, बैंचोद chaos को बदल के ऑर्डर में ले आएंगे, है ना, तो ये है। तो so we accept fear because we know fear is making us better, fear is making us sharper, fear is fucking pumping my body with fucking adrenaline, fear is fucking focusing my mind to a razor sharp fucking pinpoint, जिस तरफ बैंचोद उंगली घुमाऊंगा उधर ही गोली लगेगी साला, ठीक है, ये है। So we use fear, we don't run away from fear. Fear is good. सबको डर लगता है और डर लगना चाहिए, अगर डर नहीं लगेगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे तुम, ये है कहानी। इट्स लाइक जंपिंग आउट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, राइट, है ना, अच्छा खासा हवाई जहाज उड़ रहा है ना, पैराशूट पता नहीं किसने पैक किया है, उस सुबेरे बीवी से झगड़ा कर लिया होगा, पता नहीं उसने ठीक से पैक किया नहीं किया, ठीक है, उसका, है ना, बेटे ने फोन किया होगा, पापा मैं IIT जा रहा हूँ, मुझे बैंचो 2 लाख का लैपटॉप चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, राइट, स्ट्रेस, है ना, तो वो बंदा साला पैराशूट पैक कर रहा है, उसका पैराशूट पहन के, है ना, आप लोग हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं, हम लोग, है ना, वहां से कूदने वाले हैं, है ना, फ्रॉम व्हाटएवर यू आर जंपिंग फ्रॉम बड़ी फकिंग क्रेजी हाइट्स, ठीक है, तो है ना 15,000 20,000 30,000 जो भी हाइट से आप कूदने जा रहे हो, है ना, तो इट इज अननेचुरल फॉर द बॉडी, it is unnatural for the mind and unnatural for the body to jump out of that fucking aircraft, it's unnatural, ठीक है, but we do it based on our basically intellect, our mind is able to separate fear from what has to be done. Fear is used, how do we use, डर तो लग रहा है भाई, है ना, ऊपर से नीचे देखोगे और डर नहीं लगेगा तो आपको, ना, आप फिट नहीं हो इस संसार में ऑपरेट करने के लिए, आपको या तो 5D में चले जाना चाहिए या 2D में चले जाना चाहिए, 3D 4D में नहीं होना चाहिए अगर डर नहीं लगता है ना, इस संसार में people try to reject fear, you should never reject fear, anything you want to have power over, you should be able to accept it first. उसको जो मैदान में नहीं आने दोगे तो फुटबॉल कैसे खेलोगे उसके साथ, है कि नहीं, तो ये है कहानी, है ना, तो क्या कहते हैं, so use fear, understand it that it is happening for a reason, it does not make you bigger or smaller, it does not make you better or worse, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो यार जिसको डर नहीं लगता है वो ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं करता है, वो या तो हम उसको निकाल देंगे, जो बंदा डर नहीं रहा है वो दूसरों को साला फंसाएगा, वो खुद तो साला उल्टा काम करना शुरू कर देगा क्योंकि उसको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई वो थोड़ी ना है कि मार्क्स कम मिलेंगे, है ना, या तो भैंचोद बहुत सारी गोलियां मिल जाएंगी अगर गलत काम कर दिया तो, ठीक है ना, बंदे मर जाते हैं, लोगों के बीवी बच्चे होते हैं, the fucking 3 generations will get very screwed up if they are not, if people make mistakes in our game, जो हम गेम खेलते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किसी आदमी को डर नहीं लग रहा है तो वह दूसरों के लिए खतरनाक बन जाता है, तो डर लगना बहुत जरूरी है भाई, पर डर के 2 आउटकम होते हैं, एक आदमी या तो पैरालाइज हो जाएगा डर के मारे, बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, साला कुछ नहीं कर पाएगा, दिमाग शून्य हो जाएगा, बॉडी शून्य हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आदमी होता है उसी डर की वजह से जो बॉडी में एड्रेनलिन पंप हो रहा है, उसका माइंड फोकस में आ रहा है, उसको लेके वो जो चीज उसे डर दे रही है उस चीज को वो खत्म कर देगा, है ना, तो इट इज योर रिएक्शन टू फियर that you should be aware of, not the fear itself. Use fear is your friend. Anything else? Sir, Indian Army is known for its high level of discipline. How can a civilian develop such level of discipline? Okay, क्या होता है ना, Indian Army is there known for high level of discipline, and then there is special forces which is highest level of discipline, ठीक है, डिसिप्लिन के बिना कुछ अचीव नहीं हो सकता, पर क्या होता है ना, डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है लोग नहीं समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज यार इज इन फॉर एग्जांपल इन स्पेशल फोर्सेस क्या है ना, हमारे आज दुनिया अब आओगे तो देखोगे यार जो इतने लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है, इतने लंबे लंबे बाल होंगे, इतनी लंबी दाढ़ी होगी, जो पता नहीं अलग अलग टाइप का जूता पहन रहा होगा, पता नहीं कुछ और कर रखा होगा,
कुछ और ही चल रहा होगा, टैटू टूटू बने हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या है, उल्टा ही बिल्कुल अलग ही, ठीक है। बट क्या है, उसको जो काम मिल रहा होगा ना उस बंदे को, ठीक है ना, जो भी वो काम कर रहा होगा उस काम में उसने प्रैक्टिस कर करके इतना हाई लेवल डिसिप्लिन, उसने बेसिकली इतना हाई लेवल ऑफ टैलेंट को उसने जो शार्प फोकस बना दिया होगा, उसने बड़ी अपनी मतलब he would be body so prepared for what he has to do. He would does not need to be told, he does not need to be told कि यार जाके प्रिपेयर करके आओ या ये करके आओ या वो करके आओ, तैयारी करो, बैंक लड़ाई लग सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमारे यूनिट में किसी को ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता, खुद ही लोग करते रहते हैं, खुद ही। दैट्स डिसिप्लिन यार, बिकॉज हम लोग अपने मन से आ रखे हैं। तो जो चीज अपने दिल से चुनो, उसके लिए प्लानिंग करो, यू नो, मेक ए प्लान एंड फकिंग एग्जीक्यूट दैट प्लान, ठीक है। दैट्स डिसिप्लिन यार, है ना, ये है। Have I answered your question? Sir, how do you plan in the armed forces? Like you focused on planning quite a number of times during your content. And sir, I would like to understand, like when I have some task at hand, I sometimes find that my plan might not have worked that well. So how do you plan so you do not go out of the hay when it comes to that? Okay, प्लानिंग की सबसे पहले गड़बड़ होती है कि व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर। अगर आपने ऐसा कोई टारगेट चूज कर लिया है जो आपको करने का मन ही नहीं है, तो उसकी जितनी प्लानिंग कर लो आप फेल होना ही होना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग अबाउट अ प्लान is choose that you really want, yaar, what you really want, choose that first. For any plan to be successful, and this is the most fucking important thing about any fucking plan, is choose what you fucking heart wants, yaar. If you choose what your fucking heart wants, प्लान प्लून, है ना, पैसे, घोड़ा गाड़ी घर, है ना, परमिशंस, ये वो सब कुछ, बाकी सब कुछ बाद में अपने आप आएगा। तो अगर आपने प्लानिंग जो आपका करने का मन ही नहीं है, वो आप बड़ी इलॉन मस्क, बिल गेट्स, किसी को बुला लो, वो जो मुझे बुला लो साला, मैं आऊंगा तो प्लान तो सक्सेस कर ही दूंगा, बट क्या बोलते हैं बट जस्ट जोकिंग, but if your plan is not aligned with your heart, basically your plans are made for what? They are made to achieve some target, है ना। If the target is not what you want in the first place, then you know what your heart really wants. If your heart really doesn't want that, then you can keep making plans. You will keep going through success and failure, limited success, more failure, things like that chalta rahega. Permutation, combinations of success and failure is what you will experience if you have not chosen the target from your heart. In that experience, what you will slowly जूते लात घुसे खाते खाते आपको रियलाइज होगा कि यार एक्चुअली मुझे कुछ और चाहिए था, ठीक है, तो कुछ और चाहिए था। तो फिर आपका, है ना, आपका basically you will have a lot of experience, you will have clarity of heart, clarity of mind, and you will circle back to find actually what you really wanted to do, and then you will start doing it, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो फर्स्ट थिंग अबाउट मेकिंग अ सक्सेसफुल प्लान इज चूज योर टारगेट फ्रॉम योर हार्ट, है ना। लोग क्या गलती कर जाते हैं, है ना, सोचते हैं दे चूज देयर टारगेट्स फ्रॉम देयर माइंड। योर माइंड इज लिमिटेड, है ना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए 3D वर्ल्ड, ठीक है। तो आपका माइंड, है ना, लिमिटेड है, उतना ही सोच पाएगा, ठीक है। बट योर हार्ट इज ए मल्टी डिमेंशनल थिंग, है ना, उसमें भगवान भी है, यमराज भी है, जो सब दुनिया बैठा हुआ है तुम्हारे दिल के अंदर। तो from your heart, if you take decisions, है ना, choose your targets from your heart and then start thinking using your brain कि वहां पहुंचना कैसे है, ठीक है। then you have a clear shot at success. In fact, you will succeed, ठीक है। it is inevitable. If you have chosen targets from your heart, you will succeed. Success has many different ways of expressing itself. Either you will find you will complete your target and you will achieve your target, or you will find that you have evolved to a new target, a fresh target. Your old target will take you to a new target which is higher and higher than it was what you were planning or dreaming about before, ठीक है। So क्या कहते हैं, so basically your heart is like the compass which chooses the target, and your brain is like a quantum computer which has been given to you for your use. उसमें इनपुट डालो अपने हार्ट से और आउटपुट निकलेगा आपके लाइफ में, ठीक है। your brain is supposed to be used to calculate, only calculate,
how to achieve what your heart desires. That's it. ठीक है? So that distinction has to be understood before you start planning anything. ठीक है? When you sit down to plan something, so this is something that I learned in combat. ठीक है? हम लोग क्या करते थे, like I would sit, there were people who would, you know, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन खबर आती थी, भागते थे ऑपरेशन की, है ना, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर चल रहा होता था. So when you are constantly, you will feel physical fatigue, you will face mental fatigue, and if you go for fucking 10 operations in 1 month, and you will maybe achieve success in 1, but 9 times you will achieve failure. You know, when you fail fucking 9 times out of 10 times, what will happen is that you're somewhere in your brain, you will आपका बेस कैलकुलेशन ये हो जाएगा कि यार 10 बार में से एक ही बार एवरेज है, चलो कोई बार नहीं, है ना, बहुत मौके हैं. What I used to do, है ना, and what I found very like which worked for me, है ना, वो मैं महीना 1.5 महीना में एक बार निकलता था बाहर, बस once. पर वो महीना 1.5 महीना मैं यूज्ड टू बी फकिंग, मतलब दिन रात उसकी प्लानिंग चलती थी, ये चलता था वो चलता था, कैलकुलेशंस चलते थे. बेसिकली आई यूज्ड टू विजुअलाइज, मेरे दिमाग में पिक्चर चलती थी, विजुअलाइज योर टारगेट, विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू अचीव. सो एवरी स्टेप ऑफ द वे कि मेरे को यार 2-3 रात ऐसे पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते जाऊंगा, ऐसे ऐसे पहुंचूंगा, एक एक कदम मैं विजुअलाइज करता था. हम ऐसे चल रहे होंगे, यहाँ पे खतरा ज्यादा होगा, यहाँ पे खतरा कम होगा, हम ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे, यहाँ पे ये हो सकता है, वहां पे वो हो सकता है. तो उससे मेरा क्या होता था, मेरे पिट्ठू के अंदर क्या होगा उसकी प्लानिंग चलनी शुरू, मेरे पास हथियार कौन से होंगे, मेरे साथ कौन चल रहा होगा, तो ये सारा चीज मेंटल विजुअलाइजेशन से आता था. सो विजुअलाइज योर टारगेट एंड विजुअलाइज द जर्नी टू दैट टारगेट. तो ये, एंड टेक योर फकिंग टाइम, है ना, देयर इज नो टाइम की, है ना, कि क्या बोलते हैं, ये 10 दिन में करना है या 5 दिन में करना है. एंड थिंक सम टारगेट्स ऑफ कोर्स आर डिफाइंड बाय टाइम आल्सो, बट यू नो दैट इज अ सेपरेट थिंग. But don't be in a hurry to get anywhere in life. You are where you are supposed to be, है ना. लोग क्या करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं ना, पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे यार बहनचोद 1957 में बहुत मजा आया था क्योंकि हमने वो किया था. 1957 में क्या चल रहा होगा, बहनचोद यार 10 साल बाद जब मेरे पास पैसे होंगे ना, ये वो तब बहुत मजा आएगा. ठीक है, तो दुनिया ने हाफ कॉक करके जिंदगी चलती है. ठीक है, दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग ऑफ आवर टाइम्स. यू नो, we look at our past fucking romantically and we look at our future with fear, है ना, we don't know, है ना. So first thing is to be, what I will tell you is this, that learn to live in the now, because only the now is real. इसी वक्त में, ये नाउ क्या है, नाउ जो अभी चल रहा है, दिस इज रियल. इन दिस यू हैव ऑप्शंस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, you have options to plan for your targets, you have options to look back at your past, you have options to take any action in the now. ठीक है, सो क्या कहते हैं, पहली बात तो है ना, फ्यूचर और पास्ट से निकलकर नाउ में प्रकट होना जरूरी है. Most of us, at least what my experience I have seen, most of us are either living in our past or living in our future. जहां एक्चुअली कुछ कर सकते हो in the now, where you can actually take some action, some fucking step, some plan you can make, you can choose some fucking target, you can, you know, there's this girl you're fucking in love with, you can fucking pick up a call and fucking call her and tell her fucking I love you, finish, है ना, बाकी तुम्हारी मर्जी. ठीक है, बट क्या है, नहीं 10 साल बाद जब मैं ना इतना पैसे कमा लूंगा, 2 रॉकेट बना लूंगा, मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा, तब उसको मुझसे प्यार होगा, तब बात करूंगा. ठीक है, तब शादी खत्म, मेरा कहानी खत्म हो चुका होगा. सो start living in the now, see what you have, be very clinical. हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि हमारे पास अभी क्या है, मेरे पास, अच्छा ये मेरा टारगेट है, ये मैं टारगेट दिल से चाहता हूँ, मेरे को चाहिए बैंचोर. ठीक है, ओके, दिस इज माय टारगेट. ठीक है, इसके लिए मेरे पास जनरली, अगर मेरे पास टाइम लिमिट नहीं है तो मैं टाइम को छोड़ देता था. टाइम इज वेरिएबल, है ना, इट इज डिपेंडिंग ऑन योर परसेप्शन ऑफ हाउ यू परसीव टाइम. ठीक है, तो देन अच्छा ये है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरे यू नो फैक्टर्स हैं जो मेरे को प्लानिंग में लाने, इतने टाइम में, इस डेट तक, इस बजे तक मेरे को ये टारगेट अचीव करना है. ओके, सीन, ये टारगेट अचीव करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, आई नीड इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, आई नीड इन्फॉर्मेशन. ओके, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, मेरे को चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग हैं, इनके पास हथियार क्या है, ये खाना पीना क्या खाते हैं, इनके टाइमिंग्स क्या है, इनकी रूटीन क्या है, ये कहाँ कहाँ घूमते हैं, इनका ट्रैक क्या है, मैच रेडियो सेट कहाँ खोलते हैं, वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन. ठीक है, देन व्हाट डू आई नीड
to have certain skills. I need बैंचो इस ऑपरेशन में हाई एल्टीट्यूड में बैंचो माउंटेनियर्स की जरूरत होगी, ठीक है, यहाँ पे बैंचो क्या बोलते हैं, हमारे पास ना, हमारे पास यूएवी की जरूरत होगी, we will need this, so you know like that you start planning यार, है ना, पिक्चर अनफोल्ड होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, फिर ओके ठीक है, इसमें यार ये है तो बहुत ही यहाँ पे बहुत सारे हैवी तादाद में बैंचो आतंकवादी बैठे हुए हैं, तो पर हम लोग हैवी तादाद में जाएंगे तो उन लोगों को बहुत पहले पता लग जाएगा, तो वो पहले ही भाग जाएंगे या पहले ही हमारे लिए बैंचो रेडी रहेंगे मारने के लिए हमें, है ना, तो क्या करेंगे, हम स्मॉल टीम में जाएंगे, 4 दिशा से दो बंदे घुसेंगे, है ना, ठीक है, हम अपने स्किल पे अपनी ट्रेनिंग पे अपने हमने जो इक्विपमेंट कैरी कर रखा है हम बैंचो 50 को दबा देंगे, ठीक है, कर देंगे, पर so that's how it happens, so you start planning, you know, ऐसे करके प्लानिंग चलता है, but all I will say to you is this, that first thing about planning is choose your target from your heart. If your heart is in alignment, the fucking universe will submit to your will. That's how it is. That's how the world works actually. Sir, can you hear me? Yeah. First of all, sir, I want to point out just a normal point that I'm a huge fan of yours, sir. I've been following your videos for like an year and a half, and basically I want some tips from you, sir, because based on your present answer, I just want to shape my future life. Sir, in your entire journey of this army, killing terrorists, and conquering the entire nations type thing, what is your opinion in the question that what is better? Is it fear or is it respect? Fear or respect? Yes, sir. Would like the people in front of you, around you, those who know you, do you like them to fear you or do you like them to respect you? No, I don't want anyone to fear me. There is no need to fear me unless there is a need to fear me, है ना, तो ये है कहानी, ठीक है, मैं तो आपके देश में आके आपको तंग नहीं कर रहा हूँ, है ना, मेरे देश में कोई आएगा मैं जो है ना मुझे तंग करेगा तो फिर he should fucking fear me for without fucking doubt, we will bury him fucking, उड़ा देंगे साला, ठीक है, तो ये है ना, हम we are not aggressive this thing, no, we are not going around buddy troubling other people in their nations or troubling them and telling them what the fuck to do. But if somebody comes into my nation and starts troubling my family and my countrymen and starts creating instability within my nation, and I speak as a soldier, I'm not speaking Yes, about sir. me, I'm speaking about what our mindset is, ठीक है, तो if somebody comes in here and so fucking he fears me or respects me, that's his problem, ठीक है, हम लोग को तो पता है हमने क्या करना है ना, तो ये है कहानी, so ये है, and otherwise fear and respect are outcomes for other person to decide what they want to feel, yaar, है ना, neither do I seek respect nor do I seek fear, I seek to be able to do what I wish to do, that's all. यस सर, सो ये जो आपने आंसर दिया तो बेसिकली आपके सोल्जर लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गया कि आपको अपने नेशन को फर्स्ट रखना है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बट लेट्स जस्ट से कि आपकी बाय द वे यू हैव बीन गिवन अ चांस कि आप अगर हमारी उम्र के होते और आपको फिर से मौका मिलता है अपनी लाइफस्टाइल को एक बार और रीशेप करने का, तो आप उसको किस तरह से रीशेप करते हैं? इस तरह से कि आपके आसपास के कलीग्स और आपसे डरें या फिर आपकी इज्जत करें? डरे इन द सेंस, नॉट इन द बैड सेंस कि आप उनको कुछ हार्म कर देंगे. I've got your question यार, I got your question what you are saying, and उसका Yes, मैं sir. वही जवाब वही मैंने जो लास्ट में बोला is this, that I don't think of life like that कि other basically to achieve my dream, basically to be with the way I am or what I want to do, let's say I'm leading a team for something, ठीक है, जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, let's just Yes, sir. ठीक है, अभी तो डिस्ट्रक्शन छोड़ दिया, अभी क्रिएशन में घूम रहे हैं, राइट, तो बिल्कुल सर. क्या कहते हैं, in this field somebody fears me or respects me, that is their problem, yeah, it is not my problem, or it is not it, I will be inefficient in my operations if I start thinking how are other people thinking about me. How other people think about me is their business, yeah, whether they fear me, whether they respect me, whether they don't think about me, whether they think about me, whether they love me or they fucking hate me, how does it affect me? It is what I feel about myself. Do I fear myself? Do I respect myself? Do I love myself? Do I hate myself? What do I feel about myself? Basically, your universe is a projection of what you feel about yourself. Your circumstances, your experiences, your flow of life, your productivity, your incapacity, all instability, stability, all of these things are linked about how you feel, how you are, right? So actually this ये भी है हमारे
संसार की दिक्कत बैंक दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरों का क्या फीलिंग चल रहा है, फक दैट यार। तुम एक ब्रह्मांड हो अपने आप के अंदर, तुम्हारे पास खुद के लिए इतना सब कुछ है करने के लिए, दूसरों के लिए तो साला सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, ठीक है। सो द मोर यू फोकस विद इन, the more you focus on how you are feeling, what do you want, do you want people to fear you? That's actually any emotion. Let's just take this face value पे लेते हैं इस question को कि fear, if people start fearing me, let's just say, शुरू में तो काम चल जाएगा, ठीक है, Yes, sir. है ना, मैं धमका दूंगा, डरा दूंगा, कुछ बोल दूंगा और काम हो जाएगा, है ना। पर slowly over a period of time, what will happen is, basically, where is that need to create fear coming from? That need to create fear in the outside world is coming from a insecurity within only. I'm afraid of the outside world, therefore I want to fucking control the outside world using the very thing that I'm afraid of, fear. Okay? Yes, so ultimately fear is undesirable in that way. To give fear to anybody else is undesirable. For example, क्या बोलते हैं, if I'll just use example, combat related example, ठीक है, sometimes fear is effective, but that is not a fear that we have created, that is a fear that has been realized by the enemy कि यार ये लोग हैं साला, ज्यादा हमने इधर छेड़छाड़ कर दिया तो वो लोग आ जाएंगे, तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। so that is respect or fear, it is your choice what you want to call it, ठीक है। yes, sir. So it is like that often. So that is again linked to efficiency. Everything is linked to efficiency, ठीक है, of how minimum energy maximum fucking output, ठीक है। so क्या बोलते हैं, so कई सारे ऑपरेशन हमें करने ही नहीं पड़ते क्योंकि वो होने का मौका ही नहीं देते हम, because people are adversaries or whatever, this world is in duality, right, है ना। Yes. है ना, है ना, सबके कोई दुश्मन है ना, सब एक दूसरे में कोई, you know, this India, Pakistan, whatever is going on, ठीक है, world is steeped in duality at various fucking levels, ठीक है। so what we do is we do our job and we do it properly, and we do it in such a way that we display our capability, so we get respect also and we are feared also, both, ठीक है। वो दूसरे के ऊपर क्या है, कई लोग को डर से ज्यादा इज्जत पे ज्यादा चलते हैं कई लोग, है ना, जिसके लिए जो चल जाए, किसी के लिए फियर इज द ड्राइविंग फैक्टर, किसी के लिए रिस्पेक्ट इज द ड्राइविंग फैक्टर, दैट इज देयर चॉइस टू मेक। हम लोग जब काम करते हैं ये नहीं सोचते कि यार डरा देंगे या इज्जत कमा लेंगे, कोई लेना देना नहीं है उन सब चीजों से। हम अपना काम कर रहे हैं यार, जिसको जो समझ में आए, है ना, जिसके लिए जो चलता है वो समझ लेगा, ऐसा है हमारा। सो वी डोंट काइंड ऑफ worry about what other people will think. We think about, we introspect a lot about what is driving us, what makes me feel good about myself and what doesn't make me feel good about myself. So I repeat cyclically more and more things that make me feel good about myself, and I do those things less and less and less which don't make me feel good about myself. That's it. Thanks a lot, sir. You're welcome, brother. Am I audible? Yes. Hello, Vivek sir. It's been really an honor to talk to you. I just wanted to ask, like, during the 14 years in your service, there must have been a time in an operation or life in general, like where you find yourself stuck in the middle of something, like the whole world is crashing on you. Something has went really wrong. There is no option out. Like there no escape, like आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है, तो like how you guys, प्रलय बोलते हैं इसको, प्रलय बोलते हैं ना, प्रलय आ गया है, the prelay situation. तो how you guys cope up with that? Like कहाँ से आती है, like वो effective intelligence, like उस moment पे क्या operate करना है, कैसे survive करना है, so where does this thing come from? Where is that effective intelligence, and how can a civilian like me can develop these officer like qualities in me? Okay, there is nothing to do with officer like or non officer like in this कहानी, ठीक है। सब इंसान capable होते हैं, बस उनको कुछ लोगों को ज्यादा पता होता है, कुछ लोगों को कम पता होता है, कुछ लोगों के experiences अलग होते हैं जो उनको सिखा देते हैं कि you know, they are fucking good and they are complete within themselves, and some people go through experiences which actually makes them feel less about themselves, so they struggle more in life, ठीक है। But
to answer your question where you said ki how to handle situations when everything has gone to shit. ठीक है, सब कुछ जो फट गया, पाताल आ गया, अब क्या करें, right? So first things first is the first and the most powerful thing to do in a situation where you don't know what the fuck to do is to accept the situation. Accept it. If it is death in your face, if it is failure in your face, if it is rejection in your face, if it is the end of your worst fear has come true, accept it. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाओगे, वो तो मौत तो हर कदम साथ चलती है कि नहीं? जहां बैठे हुए पंखा गिर गया आपके सर के ऊपर, मौत आ गई, अर्थक्वेक आ गया, मौत आ गई, न्यूक्लियर वॉर हो गया, मौत आ गई, रोड एक्सीडेंट, सब्जी खरीदने गए, रोड एक्सीडेंट हो गया, मौत आ गई। मौत कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, ठीक है? इसमें जरूरी नहीं है कि आपको स्पेशल फोर्सेस में होना है तभी मर सकते हैं, है ना? हिस्ट्री हैज प्रूवन दैट एवरीबॉडी कैन डाई, ठीक है? So worst fear, let's say that death has come, है ना? Accept it. The moment you accept the cause of your chaos has come under your control. That is the first step to take chaos under your control. Fucking accept the chaos. Accept it. है ना, कि हाँ ऐसा है, मैं मरने जा रहा हूं, मौत आ गई है, अब क्या, है ना? या तो तुम मर जाओगे या तुम्हारे पास सोचने के कुछ और क्षण बाकी होंगे। उस सोचने के क्षणों में क्या होता है, once you have accepted, the whole world options will present themselves to you. There will be certain options, and then basically it is about realizing what you are, ठीक है, what you are. So once you accept destruction, you accept chaos, you just accept it, you come into a frame of mind where you will start looking at survival after that. ठीक है? Your brain, like I said, is a quantum fucking organ, ठीक है? Anything can happen inside somebody's brain, है ना? All that we know about the world today is because some thought came into somebody's brain, है ना? So all that we know of our world around us is because the brain has produced some instant टक करके कुछ निकल के आएगा. Trust that. Accept the chaos. Accept whatever has stood in front of you, whatever experience you are experiencing at that moment where you feel that your life is finished. Accept it. Once you accept it and you let go, then the universe will take over. You are part of this universe, है ना? So once you accept things will fall into place on their own. This has happened to me actually 3 times. So I am speaking from experience. कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? जब कोई बंदूक लेके आपको साला मुंह में डाल के देख रहा है आपको, तो वो क्या बोलोगे यार, अब है ना, ठीक है यार, मार ले फिर, क्या है ना? Then you do some calculations कि क्या है क्या नहीं है ना? So I accepted it. The moment I accepted it, the fear गायब हो गया, body came into play, mind came back to life, and then various options played out, ठीक है? जिसमें से I took one option and I survived, and I'm talking to you here today. So it's like that, and that's like this for everyone. That is what I have realized. We are all same only in a way. All of us, all human beings in this world, in the history of time and the eternity of future, है ना? There is never ever another person. There are no two people born alike. Basically, all people, all human beings, whatever life this earth or this universe will experience is unique. It happens only once. ठीक है? So basically, you are as unique as the universe itself. That's a fact. It's a logical fact. So when chaos happens in your universe around you, the only way to control something is to accept it, है ना? उसको पहले अपने घेराव में ले आओ, एक्सेप्ट कर लो, आ जाओ, अंदर आ जाओ, ठीक है? जब वो आपके अंदर आ जाएगा तभी तो उसके ऊपर आप काबू कर पाओगे. जब उसको आप अंदर ले आओगे, you are a quantum being, है ना? When a quantum problem enters a quantum space, it will find a fucking quantum solution, ठीक है? So it's like that.
acceptance and realizing what you are. Even that is an outcome of acceptance only. So my answer to you would be this, that when shit hits the fan, when your world seems to have come to an end, when failure is standing in front of you and mocking you, when when anything like of this nature is there in front of you, fucking accept it. First accept it, and then think what you want. Then the solutions will start appearing on their own. You will not have to do anything. Just accept. Great, sir. Great. So, sir, I had one personal question. Again, before asking it, uh, please answer it according to your if you are comfortable. So being a special forces operative, you have seen death very closely, right? So my question to you is that what is the meaning of life according to you, and like why do we exist in this universe, and what is the purpose of life according? Love is the answer. So okay, I'll tell you about this. क्या है that this universe, and whatever I am saying from logical conclusions, not from some किसी महात्मा ने बताया होगा मुझे या something like that. These are coming from my life experiences. This is coming to, I am a firm believer in 2+2. ठीक है? I take very few chances. The chances that I take are logical thing. The risks that I take are logical to me. That's why I take risk. ठीक है? I don't take risk because I like taking risk. I don't like taking risk at all. ठीक है? But there are risks. Other people look at me and say, इतना बड़ा risk कैसे ले लिया यार तूने? Because fucking I can calculate more than you can. That's why. I've got more figures and more equations in place for me to look at, which maybe you can't. That's why you feel it's risky. I don't think so. So the thing is that this, imagine God as the singularity, right? There is a God, he's singular, right? हम लोग तो सब उस God के अंश हैं. We are parts, particles, atoms, whatever, which have come from that one God, right? Now imagine yourself as that one God sitting in the Brahman, knowing that the Brahman is in his, he is dreaming the Brahman, right? What will you feel? You will feel fucking lonely. You will feel like, in my opinion, I would think कि यार मैं जो अकेला मैं ही हूँ, ब्रह्मांड मैं ही हूँ, और मैं बैठा हूँ और मैं अकेला हूँ और मेरे अंदर सब कुछ चल रहा है, और I have love, but I have, what is the highest feeling, which is the highest energizing factor in this world? सबसे ज्यादा एनर्जी किस इमोशन से आती है? It comes from love. एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी को उड़ा देगी, किसी को. To protect her child, a mother can fucking kill anyone, destroy anything. So that is the most powerful energy. Yeah. She can lose her respect. She can go through anything in life, sacrifice fucking anything, right? A father for his son, or a mother for her child, or whatever, a son for his mother. These are what? These are all equations of love. So love is essentially that energy which can power anything and which gives meaning to existence. When you are in a state of love, time stops to hold meaning, anything else stops to hold meaning. ये मुझे 10वीं क्लास में समझ में आ गया था when I fell in love. ठीक है, मेरे को 10वीं क्लास में समझ में आ गया था कि बाकी सब बकवास है जो भी चल रहा है दुनिया में. लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोग शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लोग कुछ बनाना चाहते हैं, कोई कुछ तोड़ना चाहता है. ठीक है, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था. मुझे प्यार हो गया था, मुझे समझ में आ गया था कि प्यार ही है सब कुछ, जो भी है यही है. दिस इज द हाईएस्ट form of existence. This is the highest feeling that a person can feel, and that's what I thought. So I realized ki, so then my life, I went through experiences in life, and where I sit today, so I realized, I thought ki, okay, why would God create this universe? What is the reason? So this answer is in two elements. एक तो है ना, मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया, है ना? तो मुर्गी और अंडा can exist independently. ठीक है, मुर्गी does not need anda to exist, and a fucking anda does not need murgi to exist in the fucking quantum world. ठीक है, they can exist independently and simultaneously at any point of time and anywhere in space or time. ठीक है, so when God is sitting alone
with nothing, and he is the supreme being, he is the singularity, or he or she, whatever, and from there springs the universe. His highest form of feeling is love, and his love is internal, right? He's feeling his vibrating in various in his state. Why would he create love? What would be why would he create the universe? The highest thing would be, like, if I was God, what I would want to experience that love coming from something other than me, to feel love coming from outside, to be loved. That is the highest form of feeling. So God created this universe to various experiences and various yings and yangs and pluses and minuses and, highs and lows and destruction and creation and all of this, so that he could experience love from someone else, from something other than itself. So therefore duality was created and this universe came into existence. That's what I think. Otherwise, the need to have a reason for the universe to exist again comes from the mind. The need to have a reason. I mean, who said there should be a reason for anything to exist? Why should there be a reason? Who said so? कि यार कुछ भी होगा तो उसका reason जरूर होना चाहिए. The need to have a reason is born in the mind. And if you are looking for an answer, my experience and my outlook and what I have understood, realized, and believe, it's love. That's the answer. Sir, all these answers, I find that even though you have kept it very very simple, they have baffled me because I have never found something so relatable in my whole life. Like, it is so overwhelming that I'm not able to consolidate all that you have said. So, sir, really interesting talk this has been. Sir, one question that I would like to ask that, sir, whenever you were operating in the teams, there are challenges, and then you worked as a team. So, sir, how do you gain trust of others? Like, because you said that you do not care about others' feeling and you just want to do what is given to you. But, sir, when you are working in teams, when you are leading some team or some entity, then what people think do matter, because sometimes they might be in your teams, sometimes they might be at the receiving end. So, how do you deal with that? Okay. So what happens is, in the probation process, in the selection process, basically वही लोग पार होते हैं जिनसे हम प्यार कर सकते हैं. ठीक है? So in special forces is completely operating on love. That trust is an outcome of love, यार. ठीक है? Trust is an outcome of love. ठीक है? True trust. Like, हम लोग का क्या है, हमारा ट्रस्ट ये थोड़ा ना कि मैं तेरे को पैसे दूंगा तो मेरे पैसे नहीं चुराएगा, कल को दे देगा वापस, है ना? वो वाला ट्रस्ट थोड़ी ना है. हमारा ट्रस्ट है यार कि मैं फंस गया, तू साले आके मेरे को निकाल के जाएगा, और अगर मेरा शरीर खत्म हो गया तो तू मेरी शरीर को उठा के वापस ले जाएगा. ठीक है? So that's the kind of thing. And talking about fear and respect and things like that, how do we control a team? How do I control a team? We fucking love each other. There is no need to exercise control. ठीक है? Because firstly we select people like that. जो टीम बनी है वो हमारे जैसे ही है, एक दूसरे, मतलब I understand them, they understand me, we understand each other, who we are. We have no, हमारे में सेल्फ एस्टीम इश्यूज नहीं है कि ये ऑफिसर है, मैं जवान हूँ, या वो बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है वैसा है. हम सारे fucking we take bath naked together, we eat in the same plate, we fucking sleep together in same sleeping bag, fucking things like that. ठीक है? And क्या बोलते हैं, they know everything about my personal life, they know everything about my मतलब in profession, है ना, कि साहब को कब डर लगा और कब नहीं लगा, है ना, मेरे को पता है कि बैंचो उसको कब डर लगा नहीं लगा. We compensate for each other, we love fucking each other, we trust each other to the highest degree that is there. ठीक है? So क्या होता है ना, thoughts come and go, thoughts are changing patterns, है ना. कभी circumstances based होता है thoughts, emotions based होता है, आपके अंदर जो chemical structure है उस टाइम पे कैसा फायर कर रहा है, आपने क्या खाना खाया, your fucking thought pattern will be changing depending whether you eat a fucking samosa or a fucking batch of, eat plate of noodles. Yeah. ठीक है? So thoughts are transient things, they come go, sometimes they are positive high frequency, sometimes they are low, whatever. ठीक है? So we don't operate on thought, we don't base our trust on thought, we base our trust. I know the people who I am working with, when we are going out into the branch of the operation and we are going out hunting, fucking we love each other. Yeah, we love each other, and over a period of time that love becomes stronger and stronger and stronger and stronger,
and there is a sense of brotherhood which is basically हमारे जैसे हमारा कॉफी मग है उस पे लिखा हुआ है brothers from different mothers, ठीक है, उसको मैंने एस्ट्रे बना रखा है, तो like that. तो क्या कहते हैं, it's so the changing thought patterns of human beings, of our team members does not matter. In combat, our spirit is out there on the fucking table, and we are penetrating, our spirit is penetrating into that dimension. We are actually either going to create chaos or we are going to walk into chaos. In chaos, only one thing stands. It is the eye of the storm, and that is love. Only love can remain still in chaos. So we fucking love each other, and बाकी सब कुछ तो पता लग ही जाता है, साथ में रहते रहते पता लग ही जाता है कि, तो दैट इज कॉल्ड मैन मैनेजमेंट, कि यार ये बंदा है ना, इसको रात को अंधेरे में ज्यादा अच्छा नजर आता है, इसको आगे लगाओ, ठीक है, ये बंदा है ना, इसका बैंजो ना फटाफट इसका हथियार टक चढ़ता है, टक गोली निकलती है, इसके फटाक स्पीड ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसको इधर लगाओ, ठीक है, ये बंदा है, इसका जो मसल पावर ज्यादा है, इसके थाई मसल्स में ज्यादा पावर है, इसके शोल्डर मसल्स में ज्यादा पावर है, इसको बड़ा बड़ा रॉकेट जो भारी लोड है वो दो, ठीक है, ये बंदा है, इसका मैप रीडिंग ज्यादा तगड़ा है, जो पहाड़ों में जो अंधेरे घुप अंधेरे में इसको पता है बैंच कहां घूम रहा है, his mind is operating at, his brain is operating at such a level that in the middle of fucking high altitude, in deep dark fucking pitch black night, no fucking moonlight, he knows exactly where he is, so use him for that. But when when chaos hits, either we have created that chaos or chaos has come to me. When that happens, when chaos happens, at that point of time, we are in such a vibration of love that we are able to fucking take that chaos in our hand, fucking look at it, smash it, reorder it, align it, and go ahead. That's how it happens. Sir? Huh? Sir, what piece of advice would you like to give to students preparing for SSB interviews? Don't prepare for SSB interviews. Oh, sir, why? क्या है ना, SSB, your service selection board interview is one of the most complex interviews ever designed in this world. Number one. तो उसको beat करने का, there people think that preparing for SSB means trying to beat it. You don't have to beat it. किसी का बेवकूफ थोड़ा ना बनाना है उधर जाके, है ना? If first thing you have to understand is it's a profession. Armed forces is a profession in which there is a selection process which is called SSB. पहले written होता है, फिर SSB होता है. If the service selection board is basically a psychological process, and interviewing GTO, VTO is a पूरा process होता है उसमें, in which they try to understand your psyche. यार ये बंदा ये फौज में आएगा तो फौज में ये सिस्टम होते हैं, ये काम करना होता है, ये होता है, तो यहाँ पे ये ठीक बैठेगा या नहीं बैठेगा, ठीक है? तो if you are not clearing an SSB naturally, you should not join the fucking army. नहीं तो क्या होगा, गोली लग जाएगा, या आपको लग जाएगा, या किसी और को लग जाएगा. That is joining the army a measure of success? It is not. Becoming a, is a, let's say, a painter less successful than an army officer? Is a artist, is a musician, is a dancer, is an IITian greater or smaller than each other? It's not. तो पहली बात तो ये समझना चाहिए ना कि यार कि क्या बोलते हैं, it is good to try for things that you think you will like, but don't try to force fit a square peg into a round hole, है ना? कुछ नहीं होगा फिर. There will be no chemical reaction, है ना? You will get screwed in life, ठीक है? So first thing is that कि it is getting selected or not selected for SSB does not mean anything. Does not mean anything, ठीक है? It does not mean success or failure. Does not make you greater or smaller. Finished, ठीक है? That's one thing. Now, how to prepare for an SSB? Yes, how to prepare for an SSB ऐसा है that SSB has certain processes. There is an interview. There is some GTO ground पे कुछ बल्ली वल्ली दे देते हैं, बोला यार ये ना your innovative thinking, out of box thinking कुछ होता होगा, वो चेक करते हैं. And then there is the third thing is there is
there is a proper psychological screening, right? थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट होता है, आपको कोई फोटोग्राफ दिखा देंगे, बोलेगा ना 10 सेकंड के अंदर इसके बारे में कुछ बताओ कि क्या चल रहा है इस सीन में, और दे विल गिव यू सम वर्ड, है ना, 10 सेकंड के अंदर फटाक से उस वर्ड के वो एक सेंटेंस लिख दो. So they are basically trying to capture your natural reaction to stimuli, right? So from that, the psychologist is able to measure or make an accurate or whatever assessment of your perception of life. ठीक है, कि ये बंदा कैसा है, इसका perception क्या है और ये क्या करेगा या नहीं करेगा. So what happens, many people are actually इधर उनको ना एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में जाके उनको 10 कहानियां सुना देते हैं लोग कि क्या बोलते हैं, यार तुम्हारे पास ये वर्ड आएगा तो इसको पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव. इफ देयर इज, यार है ना, क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, there is a girl sitting under a tree and she is wearing a mini skirt and there are 3-4 है ना क्या बोलते हैं हाथ में चाकू लेके और है ना क्या बोलते हैं फटे हुए या जो भी है ना गुंडे टाइप के लोग खड़े हुए हैं और वो आपको सीन दिखा रखा है, तो आपसे है ना बोला क्या चल रहा है, तो बोलेगा एक्चुअली दैट गर्ल इज रेस्टिंग अंडर द ट्री एंड शी वाज फीलिंग थर्स्टी, और ये बंदा है ना ऊपर से सेब काट के, इसलिए चाकू उसके हाथ में सेब काट के खिला रहा है उसको. ठीक है, राइट दिस शिट, दैट्स बुलशिट. ठीक है, एक्चुअली over a period of time your perception is formed by your experiences. Most likely what the fuck is going on is that ये 3-4 बंदे लोग, they might be able to rape, must be going to bloody rape that girl. ठीक है, so truth is the key to your life. ठीक है ना, जो आपको दिखता है आप वो बोलो, चाहे उस आप है ना क्या बोलते हैं, how do you know that क्या बोलते हैं getting selected in army is the best thing in this life? No, it's not. Maybe best thing for some other people. For some other people becoming an artist is the best thing in life. So ये है, there are, energy is singular but its expression is multidimensional and infinite, right? So that's, so the expression is what you feel like, right? What you, how you want to express your energy, it's your call. How the world says कि नहीं IIT में जाओगे बेटा, तुम ये फलाना इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, तुम्हारा तो कहानी खत्म है. That's not so. There are many people who did not clear the Indian Armed Forces and went on into other fields and buddy did massive global impact things they have done. There are many, you know, so ऐसे है ना, तो like that. But अगर आपको prepare ही करना है, तो I would suggest if you ever go to any SSB training or coaching place, just learn कि क्या क्या टेस्ट होते हैं, get used to that, because वो 10-10 सेकंड में 5-5 सेकंड में ऐसे ऐसे वर्ड होता है, बंदा जो हाफ कॉक हो जाता है कि यार ये चल क्या रहा है, तो he is not able to reply only, right? So just understand to go to an SSB coaching center or to just read about, okay, these are the kind, what happens in SSB is what you should know. What answer you should write in SSB is what no one should know, except when you reach that SSB and that word comes in front of you or that picture comes in front of you or that interviewer you asks you a question. My only and only suggestion to you would be fucking speak the truth, express what you think. क्योंकि क्या है ना, आप एसएसबी कोचिंग सेंटर में जाते हो, एसएसबी कोचिंग सेंटर में आपको 10 चीजें है ना 50 लोग आएंगे एसएसबी कोचिंग करने के लिए, उसमें से 1-2 तो सिलेक्ट होने ही होने हैं. ठीक है, वो तो होने ही होने हैं. ठीक है, the law of averages पे दुनिया गेम खींच रही है, but actually preparing for SSB should not be done. You should just familiarize yourself with what happens in an SSB so you don't get fucking surprised and shocked out of your wits there, so that you are not able to write anything only. But otherwise you should just be aware of what happens in the SSB and there's no need to prepare for fucking SSB. Always speak the truth in your life. The truth, speaking the truth is the quantum key to this universe. Speaking the truth to yourself first. दूसरों के बारे में बाद में वरी करना. Have I answered your question? Yes, sir. Okay. Okay, sir. So like it's been around 2 hours, and we had like 4 or 5 questions from the audience as well. So if you have time, can we take that? Yep, quickly. Okay, Sir. So yeah. Hello, sir. Sir, I would like to ask. You must have worked under many people. Have you ever faced bullying? And if it happened, how did you handle that? I faced bullying. Yes. Yeah. I faced a lot of bullying. Lot of bullying तो नहीं बोलूँगा, 1-2 इंसान थे ऐसे. ठीक है. What happens is, firstly you have to understand a bully.
A bully is a person himself who is very insecure. ठीक है? And why would he be bullying you? At some point he would be bullying you because he feels that उसको समझ में आया था कि भाई मुझसे बंदा मुझसे ज्यादा तगड़ा है. That's why he is bullying you. कि यार ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा या थोड़ा और सीनियर हो जाएगा या थोड़ा और कुछ होगा तो ये साला ये तो he will outshine me. What I have done in 10 years he will fucking do it in 1 year flat. So इसको अभी दबा दो, इसका साइकोलॉजी अभी चेंज कर दो या कर दो. So you have to be again able to understand that I faced bullying, yes, and it made me very very unhappy and sad when I faced it. But क्या बोलते हैं, मेरे में ये था यार कि मैं जो काम कर रहा था ना वो मेरे दिल के बहुत करीब था. तो in that, but just because I loved what I was doing, I was fucking fantastic at what I was doing, and therefore invariably in due course of time I was able to tell that person कि यार या तो यहाँ से मार्च कर दो नहीं तो बस कहानी खत्म. So that's it. So you have to understand why is someone bullying you, है ना? Because that person is insecure about you, about your capability. That's all. तो टेल मी यार देख आज तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ पर हो सकता है 5 साल बाद मैं वापस आऊं, तब की सोचो, है ना? ऐसा बोल के निकल लो, क्या है. Okay, thank you, sir. Hello, sir. Hi. Sir, I want to ask you that when you have to go for an operation, how do you prepare your mind? How do I prepare my mind? Yes, sir. इसका भी ना वो है, देख, I never had to really prepare my mind. ठीक है, एक ये चीज था कि या one preparation that one used to do, I used to visualize कि गोली लग जाएगी तो क्या होगा. Worst case scenario, whenever you go out to do something in your life, whenever you are going है ना out to, है ना, जैसे रात को सिगरेट खत्म हो गई, है ना, तो आदमी दिमाग लगाएगा अभी कौन सी चाय की दुकान होगी, कहाँ पे रेलवे स्टेशन में खुली होगी, वहां पे साला सिगरेट मिलेगा भी रात को 2 बज रहे. सो यू प्रिपेयर योरसेल्फ. ठीक है यार कि यार मैं जाऊंगा या तो वहां पे मुझे मिल सकता है या हो सकता है ना मिले. So you prepare yourself for disappointment also and you prepare yourself for success and victory also. You visualize both things. ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. Worst case scenario in our profession at that time, in my previous profession, worst case scenario was death. कि जाएंगे साला गोली लग जाएगा, इतना बड़ा छेद हो जाएगा छाती के अंदर. सर में लगेगी तो वैसे ही नहीं पता लगेगा, पर छाती में लग गया या कहीं और लग गया जिसमें इंस्टेंट मौत नहीं आया तो थोड़ा टाइम मिलेगा देखने के लिए, सोचने के लिए, है ना, टाइम मिलेगा उसके बाद मरने से पहले. तो वी टू विजुअलाइज इट कि यार अच्छा लग गया है, ऐसा हो रहा है, अब क्या है. ठीक है, तो वो है. तो यू विजुअलाइज इट एंड यू प्रिपेयर फॉर इट लाइक दैट. बट अदरवाइज when you are doing something which is right from your heart, straight from your heart, when you don't have to prepare for it, you are born fucking prepared yaar. ठीक है. Hello. Yeah. Sir, one more question. Sir, I want to ask you, like, what is the importance of a plan B according to you? Like, if someone is really set his mind, like, plan A, this is my plan A, and I will be doing this at any cost, and I'm prepared for it, and I can do that. So, in case the 0.01% chance, so should he be able to produce a plan B for himself to make him more secure, or just go raw with his plan A? Okay, I'll link this to skydiving. All right. तो जब हम कॉम्बैट फ्री फॉल के लिए जाते हैं, हवाई जहाज है ना, कूदते हैं पैराशूट से, है ना, क्या है ना उसमें ना क्या है कि प्लान ए बी सी का टाइम नहीं होता है ना. देयर इज नो प्लान सी. बेसिकली प्लान ए इज योर पैराशूट, मेन पैराशूट, वो खुल गया, है ना, बहुत बढ़िया है. ठीक है. एंड अगर मेन पैराशूट खराब हो गया या फट गया या कुछ भी हो गया तो आपके पास रिजर्व पैराशूट है. ठीक है. Reserve parachute is your plan B. So it's like that. Plan B is a fine thing to have, not a problem. But क्या होता है ना, how much energy to expend on plan B? लोग क्या करते हैं, प्लान ए की प्लानिंग करते कर तो ले, मतलब प्लान ए की कम प्लानिंग करते हैं, प्लान बी की ज्यादा प्लानिंग करते हैं. So whatever you invest you focus on and you invest your energy into that focus, that thing will fucking happen yaar. And if it will not happen, then let it not happen, and then you see what is to be done. So if you have time and if you have something that thing, if plan B
प्लान बी मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेरी नेचुरल, है ना. आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या करूंगा, दूसरा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊंगा या दूसरा कोई प्रोफेशन देख लूंगा. दिस नेचुरल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है. पर क्या लोग करेंगे, चल यार आईआईटी नहीं हुआ तो, अभी आईआईटी का एग्जाम भी नहीं दिया होगा, ठीक है, आईआईटी नहीं हुआ तो, है ना, ये वाला ना फकिंग इंजीनियरिंग एग्जाम है, ये मैं स्कॉलरशिप बाहर जाके ले सकता हूँ, इतना मैं लोन लेके उस वाली स्टडी यूनिवर्सिटी में पैसे दे सकता हूँ, या चल यार एसएसबी दे देता हूँ, ठीक है. तो क्या होगा, इधर घूमता रहेगा, 6-7 प्लान निकल आएंगे. आईआईटी गया, पार्क हो गया साइड में, जो एक्चुअली करना है, ठीक है, और एनर्जी और फोकस चले गया, बट गया 50 दिशाओं में. कहां से होगा आईआईटी, नहीं होगा. So when you have an option of कि यार और प्लान बी नेचुरली दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फक द प्लान बी यार. प्लान ए. सर जैसे अपन Thank you कोई so से much. भी प्रोफेशन में जाते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं किसी भी चीज की, तो एक पॉइंट के बाद लगता है यार, कभी कभी कभार मतलब जैसे बीच में भी आते हैं, चाहे फिर कितने भी डेडिकेशन से करें, कि यार नहीं गलत चूज कर लिया, कुछ और करना चाहिए था, करना चाहिए. और आर्मी में एज अ कमांडो कभी हेलो, आई थिंक उसकी वॉइस ब्रेक हो गई है, मे बी some आर्मी network. में एज अ कमांडो लास्ट आई हर्ड, उसके बाद नहीं सुनाई दिया मुझे. हाँ. सो आपको मतलब कभी भी लगा कि यार नहीं गलत आ गए, जब वॉरफेयर में भी हो या फिर इतनी ठंड में वहां खड़े रहते हैं, या फिर हमेशा रहते हैं कि नहीं यार लिव लाइफ टू द एक्सट्रीम, और भाई वहाँ बेस्ट ही रहे अपन जो है. यार मैंने एक्चुअली आई हैव नेवर रिग्रेटेड एनीथिंग इन माय लाइफ. आई हैव हैड कंप्लीट एंड प्योर सक्सेस ऑलवेज. सो आई रियली डोंट नो. मैंने कभी मतलब मेरे को कभी ऐसा रिग्रेट करने का मेरे को कभी मौका नहीं लगा कि फौज में. पर्सनल लाइफ में बहुत रिग्रेट है, ठीक है. बहुत उल्टे पुल्टे काम किए मैंने अपनी लाइफ में, ठीक है. बट क्या बोलते हैं, ये इन माय प्रोफेशनल लाइफ एज ए स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर, नो रिग्रेट्स, नन, नन, नो मिस्टेक्स. Sir, how do you build fortitude? हाँ, Sir, how do you build mental fortitude? बाय लेटिंग लाइफ हैपन. आदमी को ना, एक्चुअली जो मुझे पता है ना, आज की डेट में अगर सबको ये समझ में आ जाए तो आदमी बहुत रिलैक्स करेगा लाइफ में, है ना. just do what you feel like doing यार, that's all यार, and do it well. बस take yourself seriously, take your dream seriously, take your dream seriously. Mental fortitude, wealth, fame, efficiency, intellect, whatever it is that you friends, love, whatever that you need, if you respect, if you respect what your heart is desiring, if you follow your heart, everything else will come, including mental fortitude, है ना. तो you are, है ना, क्या कहते हैं, you are a quantum being born with everything that you need to execute what your heart desires. You have everything. Some things you can see, some things you can't see right now. As you progress in life, as long as you keep following your heart, whatever you need will keep falling into place, keep falling into place. It will fall into place better than your brain can fucking calculate it. It will fall into place at the right time in such a beautiful way, far better than your brain could have ever calculated it. As long as you are following your heart, and if you are following your heart, in any case you will be doing your best. So like that. So mental fortitude आ जाएगा अपने आप. Don't worry about it. Hello. So, as you said, love is the driving force, and being a frontline soldier is not that easy. It's a Herculean task. So, and you have to stay away from your loved ones for months together. So, how is it really like? हम तो बस movies देखते हैं, but nobody really knows what actually happens there. So, how does it feel like to be a frontline soldier? Feels awesome, yaar. Till the time you are enjoying it, it feels awesome. Some days you don't enjoy it, doesn't feel so good. It happens in all professions. There are, like, my neighbor is there, yaar, wife and 2 young children are there here in, in India, and husband 2 साल से अफ्रीका में कहीं फंसा हुआ है, आ ही नहीं पा रहा है. This can happen in any profession, यार, है ना. This thing that मैं तो एक तो ये सोचता हूँ ना, क्या बोलते हैं, 2-3 things, people say thank you for your service, thank you for your service.
fuck off. But I did what I did. I did what I did because I loved doing what I was doing. Yeah, I loved my profession. So I don't need anyone's thank you for me to feel good about what I was doing. I was not sacrificing myself. When I was in the army, I fucking loved doing what I was doing. I loved being in the special forces. I loved what I did. So I mean, you don't have to thank me for me to do something that I love doing. Okay. And when you are doing some things that can happen in any profession. You are here sitting, you know, मम्मी है ना घी रोटी में घी लगा के आपके मुंह में डालती थी, पर अभी क्या ना आईआईटी में जूते पड़ रहे होंगे, है ना, तो क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या खाने के लिए मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, है ना, पैसे होंगे नहीं होंगे, है ना, चोट लग गई, फीवर हो गया, तो क्या बोलते हैं, माँ बाप तो है नहीं, है ना, दवाई खिलाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए. So these are things when a human being starts growing up and becoming a adult and comes into the world and things like that, you will face things in life. That's okay. But as long as you are doing what your heart desires, what your heart feels fucking vibrating in bliss and happy, everything else becomes easy to deal with. It's not a problem. It's, for example, when I was in the army, यार मैं 1 साल 8 महीने तक छुट्टी नहीं गया था यार. मैं इसलिए नहीं गया था, मैं छुट्टी इसलिए नहीं गया था कि किसी को पता ही नहीं था, पहली बात तो, कि मैं छुट्टी गया हूं या नहीं गया हूं. पहली बात तो ये थी, ठीक है. और दूसरी बात ये थी, मैंने कभी छुट्टी मांगी ही नहीं. मेरे को जाना ही नहीं था, घर जाना ही नहीं था मुझे. I didn't want to fucking go home. I want to continue doing what I was doing day in day out. नशा था ये. So there is no harder and easier. There is no slower and faster. There is no, you and the rest of the world. It's just your heart and what you wish to do, and your life is basically an opportunity for you to explore yourself and enjoy your fucking life. That's it. Do what you feel like doing. Really feel like doing. Sometimes you'll make wrong decisions. You may follow, you will say that, ki I really feel like doing this. Like somebody asked me, कि भैया ये वो बताओ, ये दिस दैट बताओ. मैंने अच्छा, तो तेरा क्या ड्राइविंग फैक्टर क्या है? तो भैया मेरे को पैसे कमाने हैं. पैसे? यार अच्छा, कितने पैसे कमाने हैं? तो बोला बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे. मैंने यार ओके, बहुत सारे कितने होते हैं? नहीं भैया बहुत सारे पैसे. तो मैंने यार बहुत सारे कितने? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, $1 fucking million, billion dollars, $1 trillion fucking dollars. How much is enough? What's your target? ये तो सोचा नहीं. ये तो सोच भी नहीं पाएगा बड़ी, क्योंकि तेरे को यही नहीं पता कि तू पैसों के साथ करना क्या चाहता है. Money is a means to an end. It is a form of energy which has to be utilized in a certain target to achieve something. पर आपने क्या कर लिया है? आपने मनी को अपना गोल बना लिया है. मनी इज अनक्वांटिफाइबल. आदमी 1 रुपए में भी वो कर सकता है जो 10 करोड़ में आदमी नहीं कर पाएगा. ठीक है. I'll give you a classic example. I was sitting with a gentleman. He was about almost 2 years ago. I was sitting in his house. He's basically founder of Indian Angel Investor Network. He was the founder of Investor Network in India का founder थे वो. तो ये वो कुछ बात कर चल रही थी, ये वो तो है ना, सीनियर गाय नहीं, ही सेज कि अच्छा मेजर साहब आप मुझे ये बताइए कि आपने पैसे कितने कमाए हैं अभी तक. तो मैंने उसको बोला सर देखिए ऐसा है ना, ये सवाल ही गलत है ये. तो सेड यार क्यों, क्या ये हुआ है? सेड सर एक्चुअली ना, यू शुड आस्क मी हाउ मच मनी आई हैव ब्लोन अप, कि मैंने कितने पैसे फूंक दिए हैं, ये पूछना चाहिए आपको मेरे को, इंस्टेड ऑफ हाउ मच मनी आई हैव अर्न, है ना. तो he didn't get it. तो मैंने बोला सर if you just type claw or you type Operation Blue Freedom on Google, you will not stop scrolling up. scroll करते रहोगे. टोटल मिला के सर मैंने एक बार गलती से 1700 रुपए मैंने स्पेंड कर दिए थे फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में. मैंने सीख रहा था कि क्या होता है एड कैंपेन, कैसे होते हैं, क्या होता है. तो शुरू में मैंने वो इट वाज लाइक ए फकिंग स्कैम, है ना. वो पता है वो गलती से 1 0 और दबेगा ही दबेगा. मैं एक्चुअली 170 रुपए डाल के देख रहा था कि क्या होता है, वो 0 लग गया उसमें एक और मैं रिवर्स नहीं कर पाया. इन $1,700 today, if you any of you can just type Operation Blue Freedom on Google and try and evaluate if अगर ये पब्लिसिटी हमने खरीदनी होती तो कितने पैसे लगते. I'm not spend money, not a fucking penny. ठीक है. तो है ना, तो आई टोल्ड हिम, मैंने सर ना अब ये पूछो कि कितने पैसे फूंक दिए हैं मैंने, ठीक है, ये नहीं कि कितने पैसे मैंने कमाए हैं.
तो ये है. So that's it, यार. So anyway, I think I got sidelined. What was your question, yaar? So you have answered my question, what it really feels like to be a frontline soldier. Okay. So, sir, one last question we would take because Right. it would the session would continue go on for like 24 hours because everyone is crazy about you. I'll come here someday, है ना. मेरे क्या बोलते हैं, I have keen interest in IIT because of the human ability biomes. I believe, you know, people with your technical skills and mindset to get into IIT is not a simple thing, and then to achieve the level of specialization and exposure in an IIT, that's the kind of people we're looking for, है ना. दिल होना चाहिए पर, है ना, दिल से भिखारी नहीं होना चाहिए, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है ना. But like that, so क्या बोलते हैं, come to us and दिल से भी भिखारी को तो भी भर देंगे हम, कोई बात नहीं, बहुत है हमारे पास. So, but to come to the human ability biomes, and we are basically exploring into expansion of human potential for everyone, है ना. So we at some point will be interested. I'll meet you guys at some point for sure. I'll come to your universities. Okay. Yeah. Sure, sir. It would be a pleasure. So, the last question which I would we have is that one student from second year has asked is that does para SF participate in any friendly competition among special forces of the world like SEALs, SAS, Spetsnaz, and if so, that are we the best? Okay. देखो क्या है कि there have been competitions in the past. There's something called Airborne Africa and things like that, जिसमें special forces of the world have come together and competed against each other. ठीक है? And we have come out winning every time. ठीक है? So that is there, but that aside, special forces ना, मेरे पास एक कॉल आया था फ्रॉम अमेरिका. somebody was saying कि ना हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें इंडियन स्पेशल फोर्सेस, यूएस स्पेशल फोर्सेस, ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस, जर्मन स्पेशल फोर्सेस, फकिंग ऑस्ट्रेलियन स्पेशल फोर्सेस, सबको इकट्ठा करेंगे और सबको एक मिशन दिया जाएगा और सब कॉम्पीट करेंगे और हम उसका ना सीरीज बनाएंगे. तो मैंने तब तक 2 पैग लगा लिए थे कहानी सुनते सुनते. मैंने उसको बोला यार ब्रदर देख ऐसा है कि who has told you that special forces will compete against each other? Special forces is a fucking mindset, yaar. ठीक है? If two fantastic people are there, no, and they are evolved human beings, they will not see how to compete and fight each other. They'll fucking think how to collaborate and evolve. Is it not? So anybody who thinks like that is the best in the fucking world, yeah. Best in his profession. He's the best. The person who is not insecure, who knows who he is. He understands what is good about him. He understands what is bad about him, and he understands he has fucking belief in who he is. He has faith in his heart, faith in his vision. That guy will meet anybody in this world, na. He will not look at competition. Competition तो जिसमें डर होता है वही साला ढूंढता है competition कि मैं इससे बड़ा हूं या छोटा हूं. We don't fucking think like that. We think यार अच्छा ये बंदा है, okay good, okay Navy SEAL. Let's see how we can work together, brother. तू भी आजा, मैं भी आ जाऊंगा, दोनों सोचते थे बियर पीते पीते बैंचों कुछ और कर लेंगे. Right? Why should I fucking fight? Why? So it's not about competition. It is about fucking, merging. Yeah. Have I answered your question? We are the best at what we do. That's it. And anybody who thinks like this is the best in their profession. Okay, are we done? I can't hear you. Hello? Swapnil, you're on. You're audible. You're audible. I need to wind up, guys. मेरे को जाना है, किसी से मिलना है. So, I think we can proceed to vote of thanks right now. So, I would like to express my vote of thanks. So,
I would like to thank Major Vivek Jacob for taking out time from his busy schedule. We, the students of IIT BHU, are grateful to you. Salute to you, sir. And I would also like to thank the audience for being patient and sticking with us till the end. We have posted a feedback form in the chat box. Please fill it. Now I would be presenting to you a small memento from our college. सर कितने बंदे मारे हैं अब तक, कुछ काउंटिंग करी है आपने? नो, आई डोंट, ये सब चीजें में हम घुसते नहीं है. इट इज नॉट ए वीडियो गेम, है ना, इट इज नॉट पबजी. कितने है ना, कितने मारे. गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट, पकॉल माइंडसेट. कितने बंदे मारे, क्या करना है तुमको, कितने बंदे मारे नहीं मारे, है ना. इट्स नॉट अ फकिंग वीडियो गेम, मैन. Am I audible now? Yeah. Extremely sorry, sir. Shruti, can you stop presenting so that we can take a screenshot? Vivek, sir, are you okay with this? Like, yeah. We can take a. So, sir, like you have given us like more than 2 hours. Shared your insights. Like, what can we do for you, sir? What can we students, we engineers do for? Spread the word about Operation Blue Freedom, Team C.L.A.W. Just share amongst this thing. It will help other people also. Okay, and that's one. And anytime we are starting a volunteer program where ऐसे करके आते हैं हमारे पास कई लोग volunteer करते हैं. We got a human ability biome. We started in Pondicherry. ठीक है. There are क्या बोलते हैं, we are having one batch now coming in basically in March, where जो prostitute zones में जो the children are there for of children born to prostitutes in basically Delhi GB Road and things like that. तो उनका एक orphanage है, so they are coming. So we are basically testing out the biome concept on them. They will be going through various processes. They'll be outdoor camping, diving. They'll be introduced to various things, different activities and different exposure about what is life actually, and मतलब past को finish and what is possibility in the future. So you guys can volunteer for things like that. Come see what we are doing and things like that. That's all. Spread the word, yeah. बाकी कुछ नहीं चाहिए. Definitely, sir. It would be a pleasure for each of us. Thank you. All right, guys. Adios. Have a good life. Thank you, sir. Yeah. Okay. Thank you, See sir. Thank you, sir. Nice. Bye. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Guys, we have posted a feedback form in the chat box. Please fill it.